So, Ode to the West Wind was first published in 1820 in Shelley's collection Prometheus Unbound. I'm reading the introduction to Ode to the West Wind in the Gale Study. In his prefatory note to the poem, Shelley wrote this poem was conceived and chiefly written in a wood that skirts the Arno near Florence, and on the day when the tempestuous wind, whose temperature is at once mild and animating, was collecting the vapors which pour down the autumnal rains. So I told you somewhere, I think in the introduction as well, that at this point of his life he was facing a lot of problems. Illness was there, he had lost 2 children, he had lost one of the wives as well. Financially he was not doing too well, and he also had himself some kind of ailment, he was very sick. So because of all these personal turmoils, he was not able to actually produce anything extraordinary. As a poet, how do you survive as a poet? If you keep producing material which is liked and loved by the audiences. If you are unable to do so, then you fail as a writer. So he was having that block, which is called writer's block, somewhere in his life, while he conceived this poem, this idea of the poem that I'm going to write on the wind in the middle of this place that they have mentioned, that is in Italy, called Florence. His description gives the location of the poem but says nothing of the strained emotional circumstances in which it was composed. Mostly when we think about any poem or any writer, definitely we have some kind of personal और we can say background agenda behind it. कुछ भी हम लिखने लगते हैं, सोचते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में चल रहा है. It is inferred by the description given in the poem that what is the place, but he never tells us what was the place, what he was feeling and what went on. It is just the perspective of the onlookers and the scholars and the theorists that they found out that these could be the possibilities. So there is no clarity given by the poet himself. For 4 months before Shelley began writing Ode to the West Wind in October 1819, his son had died. The year before, he had lost his daughter Clara. His wife Mary had consequently suffered a nervous breakdown, and he himself was plagued by ill health, creditors, rumors of illegitimate children, and failure of his political hopes. Apart from all those points that I told you that he was going through from, another point was that creditors were after him. If you remember, I told you that he used to write radicalized kind of pamphlets and brochures in order to disseminate, we can say, controversial news among masses, common people. Therefore, the forces from the government or the authoritative bodies, they were always behind them. They wanted to capture them. That's why we can say that Shelley was always a fugitive on run, somebody who doesn't have a stable ground to stay on. Okay? Apart from all those problems, ailment, dead children, dead wife, financial crisis, this was also there. And the reason behind it was the political hopes that he used to have. Everybody has some kind of hopes from government, that the government should do this in our favor, government should be able to do this, etc., etc. And when they fail, what happens? We protest in one way. So his protest was in the light of Godwin. If you remember William Godwin, who was the perpetrator to whom this was entitled to, that he started it and Shelley was following him. So that was the whole scenario behind what he felt. And then of course he was a womanizer, he was the man of women. Women really liked Shelley. Therefore there were rumors that he had a lot of illegitimate children lying around, maybe in the brothels or any extramarital affairs that he had during that time. To top it off, the public had been largely indifferent to or critical of his writing. So writer's block was caused by all these perspectives. Because he was a controversial figure, the audience, the people, they did not want to do anything with them. And it so happens in any society, every type of society, if we don't like the person, if the person is controversial, we would like to maintain a distance. Is that correct? Yes. We won't like to be associated with them, like, okay, this can't be me, I can't be seen with this person, but otherwise people will perceive me the same way. So that was happening. Even his co-buddies, co-writers were not having it, because he was having a
non-Christian, controversial kind of a life, and he really didn't care about it. And remember, he came from money. He was not somebody who was always struggling with the money. He actually lost all the money due to all these problematic things that he carried forward. He wrote a book, if you remember, The Necessity of Atheism, that also brought in a lot of shame and controversy to his family, which resulted in, cutting ties with the family. They didn't want to do anything with them. Where was the poet to gain his inspiration? So the most important point at this point of his life was where to get that muse through which poets usually write. Muse is the inspiration, the aspiration that a poet needs in order to write. हम कहते हैं ना उर्दू में आमद हो रही है, किसी खूबसूरत चेहरे को देख के आमद हो जाती है. झगड़ों पे भी लोग पोइट्री लिख लेते हैं, राइट? किसी के रोने पे पोइट्री लिख लेते हैं. So he needed some kind of inspiration. For this particular work, Shelley found his answer literally blowing in the wind. So he was in Florence, near Florence in Italy, and he felt the fresh breeze, fresh wind coming to his way, and he was inspired that he's going to talk about it. Especially the wind that makes the end of summer. Now this is important because this is the entire dualistic interpretation and nature of the poem. If you remember, I might not have told you, I will tell you right now that the poem is not that simple. Apparently, when you read the text, you'll find it to be very natural, full of descriptions which are nature-based and everything on surface level. But on deep level, because of all these perspectives, you will have multi-layered meanings and interpretations at your hand. You're not just going to read the poem on one level. Basically, you have to look at the poem from two perspectives. First is the text for the text's sake, in which we will be looking at the description of the nature, how nature is being depicted. The other one is what went on in the background and how it can be interpreted. There will be an important part in the poem that is color imagery. He is going to use color imagery in order to showcase life cycle, different people of color and different perspectives of life. Each color represents something. आपको पता है कलर की प्रॉपर थेरीज होती हैं, स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनिंग और पेंटिंग एंड स्केचिंग वगैरह जैसे आप कह सकते हैं फील्ड्स में. उसके अलावा every color has a psychological association, cultural association and much more. For example, if we talk about Pakistan, black is associated with our holy place, right? जी बेटे. Definitely that, the scaling that you have primary colors and the secondary colors, and they make other second hand secondary colors, and all those colors, they represent something somehow, right? So we'll see what colors he's going to use and how he's going to incorporate those. The reason I'm mentioning this theory, so that whenever you're interpreting the poem, you're not just looking at the natural imagery. You can add more to it, psychological perspective from color theory. आप पढ़ सकते हैं कलर थ्योरी, बहुत सारे लोगों ने दी है. किसी की भी बेसिक पढ़ लें, जैसे ईगो क्रिटिसिज्म पढ़ी थी ना आपने, उसी तरह से आपकी चॉइस है. मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आता हो तो अच्छी बात है. योर आंसर बिकम्स लेस रिडंडेंट. इट डजंट टॉक अबाउट द सेम थिंग. बिगनिंग में भी वो बात होती है, मिडिल में भी हम बोले चलते हैं. मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स लाएंगे तो योर राइटिंग बिकम्स मच मोर एलिगेंट एंड सूदिंग टू रीड. जैसे कि ये गेल ने जिस तरह लिखा हुआ है, यू सी देयर इज नो रेपिटिशन एट ऑल. डू यू सी, इवन इन द इंट्रोडक्शन इज नॉट रिपीटिंग एनीथिंग. इट्स द सेम राइटर writing introduction to the poem and the poet, but you'll see major differences in it. आगे देखिए, the wind that marks the end of summer and ushers in autumn and rainy seasons. So the entire poem is going to be based on these seasons and the perception and human faculties which perceive and interpret these. For example, some of us, we look at rain for the sake of rain, that water is coming down and that's it. But some of us, we get more out of it, right? ये जो हमारी सारी रोमांटिक मूवीज़ होती हैं उसमें रेन दिखाई जाती है, अच्छा मौसम और डार्क मौसम दिखाया. अब ये भी तो एसोसिएशन ही है ना. टू मी रेन इज़ एसोसिएटेड विद कीचड़. टू मी रेन इज़ एसोसिएटेड विद हर्डल्स फॉर मी टू कम्यूट. नाउ दिस इज़ हाउ I look at it. Everybody, calmness, yes. All these perspectives.
each one of us could perceive all these natural phenomena in different manner. For example, I don't like winters, you must love winters. Difference है ना, तो यहाँ देखेंगे कि शैले क्या कहना चाहता है. As the poem makes clear, the west wind is destructive force. There are basically 5 perspectives that are majorly discussed by nature writers. Apart from eco-critical writers, there were green writers and nature writers who came before eco-criticism. They used to categorize nature into these divisions. First is nature as a friend, nature as a foe, nature as a preserver, nature as a destructor. Okay? And there is another one I can't recall right now, maybe later on I'll remember. So इस तरह से 5 कैटेगराइजेशंस होते हैं, यानी वो दोस्त भी है, दुश्मन भी है, डिस्ट्रक्ट भी करता है और प्रिजर्व भी करता है. Isn't that so? डिस्ट्रक्ट कैसे करेगा, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए and we are affected by it. And preserve ऐसे करेगा कि हमारी सारी वाइल्ड लाइफ नेचर ने ही अपने में समा रखी है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी है. तो नेचर को इस पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है. As the poem makes, the west wind is the destructive force driving off the remaining leaves, darkening the sky with torrential rains, but it is ultimately beneficial and an important part of nature's regenerative cycle. And it teaches a lesson. As life is resurrected from death, revolution arises from stagnation. Okay, what is stagnation? Any idea? To remain stagnant in one position, जैसे हम पानी के लिए यूज़ करते हैं ना, to be stuck somewhere. Stagnant water is very dangerous these days because you can have dengue, malaria and etc. from it. So stagnation is something that causes a revolution, that causes some change in you. ठीक है, एक पॉइंट तक अगर आपको किसी चीज़ से लेके आपको तंग किया जाता है, आपको दबाया जाता है, 2 किस्म के रिएक्शंस होते हैं. Either you give up or you fight back. So when he was faced with all these problems were overpowering him. He had stagnation in his life. He lost a lot of loved ones. He didn't have money. So revolution came on by stagnation. And creative power is revived from artistic sterility. What does it mean by being sterilized? प्योरीफाई, पर्जिफिकेशन. देखिए, एक्सटर्नलाइजेशन क्या होती है, वो जो हम अपने पेट्स को करवाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पे करवाते हैं, सो दैट दे डोंट हैव एनी रिप्रोडक्टिव इश्यूज, दे डोंट हैव द नीड्स, सो दे वोंट क्रिएट अ मैस. जैसे हमारी जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, दे आर स्टरलाइज्ड फॉर मैनी रीजन्स, राइट. होते हैं ना, 2 किस्म के बकरे होते हैं, आपने नोट किया है. द वन दैट एक्चुअली ड्रिंक देयर ओन पी, द अदर वंस विच आर द क्लीन वंस. 2 किस्म के होते हैं, ये पता है ना आपको. तो जो ऐसा नहीं करते, दे आर द स्टरलाइज्ड वंस, दे डोंट हैव दोज प्रॉब्लम्स एंड द अदर वंस डोंट. इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन स्टरलाइजेशन, हाउ कैन वी बी प्योर? कैन वी बी प्योर? कैन योर आर्ट बी प्योरिफाइड? No? Yes, it can. See, if I am an artist and I'm writing on daily basis, but I have a writer's block and I can't do it anymore, I need some kind of purgification. Purge करना समझते हैं ना? Purify yourself to let go of those all impurities and second thoughts that you're having, and then focus on one particular thing. That is purgification. ठीक है, जिसको हम इन सिंपल वर्ड्स इस तरह से भी देख सकते हैं कि व्हेन यू लुक फॉर योर वी कैन से better version of yourself in one way. So Shelley was going through this problem, and then he found that he has to purify his artistic art and craft in order to produce something, and that came out of that stagnation that pushed him towards the wall, and he fought back. That is the thing that he's trying to say over here. The whole poem is a single sustained apostrophe, an address to the wind itself. The first 3 stanzas are devoted to a formal invocation. The wind is characterized and praised for its effects on earth, sky and sea. So these are the natural places that we are going to focus on: earth, sky and sea. And you see, the entire poem is an apostrophe. Apostrophe क्या होती है? In which it is addressed to a person who cannot respond, or a thing that cannot respond. And that is what is going to happen. In the first 3 stanzas, you will see that
The poet is addressing the west wind, but the west wind is not responding at all. And there is no introduction to a human entity in the first three stanzas. It is only the fourth stanza where we get an understanding there is some human involvement in it. Humanity only enters the picture in stanza 4th, in which the speaker begins what he calls a prayer, which is in line 52, to the wind, asking to be mastered by it. In stanza 5, the speaker increases his demands. He moves from wanting to be struck by the wind's force to desiring to be the wind's force itself. If you remember, Wordsworth in his poem Daffodils or I Wandered as a Lonely Cloud, maybe last lines में somewhere he says, and my heart dances with the daffodils. He becomes one with nature. इस poem में भी Shelley is asking for the power and the force of the west wind to enlighten him, or he wants to be one with him. He wants to be purified with the west wind. When the wind blows, what does it do? It takes away the dirt, it takes away all the impurities, it takes away the dust that we usually have. अब dust के साथ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ dust जा रही है. It could be those points that are there on your mind as an artist, as a poet, which were blurred. But this west wind came along and it clarified the scene for you, the image in your mind. अगर आप as a writer कहीं पे block है, वेस्ट विंड आती है. वेस्ट विंड लिटरली अगर ना भी सोचें, आपको एक रेवोल्यूशनरी थॉट आती है, आर्टिस्टिक थॉट आती है, जो कि वो सारी डस्ट जो आपके आर्ट पर पड़ी हुई है, आर्ट एंड क्राफ्ट पे, उसको साफ करके ले जाती है, तो आपका विजन क्लियर हो जाता है. दैट इज़ हाउ ही इज़ गोइंग टू लुक एट द पोएम इन दिस पर्टिकुलर final stanzas. I hope the introduction is clear. It's almost as if what I want you to move forward while we are studying this poem. ठीक है, टेक्स्ट भी हम देखेंगे और बात करेंगे. Now let's talk about the author's autobiography. It's almost the same, but then there are some pointers which are important, although I might have told you these already. I'm going to read from this text and I'm going to read a little fast. So let's follow. आप भी उसको देखें, मुझे follow करें. The eldest son of Sir Timothy and Elizabeth Shelley landed aristocrats living in Horsham, Sussex. Shelley was born on 1792. First attending Sion House Academy for 2 years, Shelley entered Eton College at the age of 12 in 1804. So he was an aristocrat. Shelley entered Eton College at the age of 12 and finally moved to University College, Oxford in 1810. His idiosyncratic sensitive nature, idiosyncratic is unique, sensitive nature and refusal to conform to tradition. Who are conformists? You must have read it in Francis Bacon, right? Have you read Francis Bacon? So what is conformity? Or Emerson में पढ़ा होगा, Ralph Emerson में? नहीं पढ़ा. अच्छा, conform करना क्या होता है? एक तो जो ना confirm कर. What is conformity? No idea? No? Conformity is agreeing with what the society wants you to do. Being on one page. That is being a conformist. और rebellious बंदा वो होगा जो अंधाधुंध फॉलो नहीं करता, जो अंधाधुंध इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, which are not actually there. अस्सलाम, ठीक है. सो conformist नहीं था, यानी जो सोसाइटी ने बोला, Shelley did not want to follow it. He wanted to have his own understanding. What about you? आप conformist हैं कि आप पहले खुद सोचते हैं और फिर अपना ओपिनियन बनाते हैं? अभी हम उसकी building stages में. If we talk about the protests that we just had, इसमें conformity नज़र आती है? Without actually researching, without actually getting the actual facts, we have protests every now and then. There is a possibility that maximum 100 or 500 people do understand what is the seriousness of the matter, but the rest of them, they are just like, everybody's doing it, so should I. That is conformity. And politics में ऐसा होता है. That is why he was very against it. Politics में ऐसा ज़रूर होता है क्योंकि उसमें बहुत कुछ at stake होता है. पैसे होते हैं, power होती है, exploitation होती है. तो बंदा कहता है अगर ये मुझे ये करने को कह रहा है तो मैं कर लेता हूँ क्योंकि इसके जो perks हैं, जो in return मुझे मिलेगा,
That's all right. So they don't think about it. So politicizing every matter can cause these hopelessness and uncertainties. Do you see those hopelessnesses and uncertainties in the light of politics in our country right now? Everything looks like as if it is politicized, does it? Yes. लगता है? I mean, any sort of matter, that is, whatever that matter is, they related with politics actually politics were involved in it. Do we have politics at personal level or home level? All the time. Every. In fact, politics is in domestic level also. Of course, of course. In every relation. Every relation, every aspect of life, every hat that you wear, you're supposed to be part of the politics. If you refuse or fail to be part of it, then you're left behind, or you're labeled, or you're actually accused of something that you haven't done. ऐसा ही है ना, it's almost as if you're driving. आपने दूसरे को भी मारने से बचाना है और खुद भी मरने से बचना है. It's just like that. So politics is like that, and Shelley was not having it. He was not okay with it. That's why he was he was radicalized, and he wanted to radicalize the masses as well. और ऐसा होता है, ये pamphlets और half-cooked knowledge, it can cause a lot of chaos and problems for the youth and generation. So जिस किस्म की थोड़ी बहुत हमारी हालत इस वक्त चल रही है, Shelley was from the similar kind of problems at that time. ठीक है, आगे देखिए बेटे. His idiosyncratic sensitive nature and refusal to conform to tradition which was going on in the society, following the followed, whatever is being told to you, just follow it blindly. So he did not want to conform to it, compounded with his hobby of performing scientific experiments. If you remember, we talked about Frankenstein and the asylums and the hospitals and the invention of medicines in different perspectives. There were many diseases, plagues which caused a lot of deaths. अब बहुत सारी डेड बॉडीज थी और हाफ डेड लोग वो होते जो ना मर रहे ना जी रहे लेकिन बहुत सख्त बीमार हैं, तो उन पे एक्सपेरिमेंटेशन हो रही थी. एंड द विमेन ऑन द अदर हैंड who refused to conform, who refused to live as a second hand kind of a second generation, या आप कह रहे second level of citizen. ऐसे होते थे ना, women were supposed to live in a certain manner, और जिसने वो मना कर दिया उसको हॉस्पिटल ले जाकर उसको यहाँ से उसकी ओवरी के आसपास किसी किस्म का बिना एनेस्थीसिया दे ऑपरेशन या एक्सप्लोरेशन की जाती थी कि इफ़ शी हैज़ सम प्रॉब्लम इन हर माइंड इट हैज़ टू डू विद हर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो वो उसको जो नहीं मानी, जिसने कहा मैंने शादी नहीं करनी, जिसने कहा मैं इस शख्स से शादी नहीं करूँगी और उस शख्स के पास पैसा है, तो वो उसको इस तरह के साइलेंस में पकड़ा देता था और साइंस के नाम पर बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए Shelley was never labeled as somebody who did something that destructive and gory, but ऐसा suggestive ही था that he was part of it. He was called Mad Shelley क्योंकि वो ऐसे scientific experimentation with politics, hopes and upheavals and personal gains and problems, जब ये सब मिलता है ना, इट्स ऑलमोस्ट आपने एक्सप्लोजिव्स को इकट्ठा कर दिया और वो एकदम से दे विल बम्बार्ड एनीबडी एंड एवरीबडी हु कम्स इन कॉन्टैक्ट विद इट. सो वो वाला पर्सपेक्टिव है दैट Shelley was called a mad Shelley somewhere. अच्छा, his idiosyncratic sensitive nature and refusal to conform tradition compounded with his hobby of performing, he used to perform scientific experiments, earned him the name of Mad Shelley. During his years as a student, he pursued a wide range of interest. He experimented in physical science. Physical science requires you to actually experiment with the physical body parts. It could be a hand, it could be an eye, or it could be your nose and teeth. अब तो डेंटिस्ट्री कितनी बेहतर है ना, if they want to extract your tooth, वो आपको यहाँ एनेस्थीसिया देंगे and you won't feel a thing and they'll take it out, right? पहले ऐसा नहीं था, जो मिल गया जिसे दर्द है, जिसके पास मीन्स नहीं है, let's exploit them, and people were being exploited that way. So उस दौर का आप शख्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, लिखा आपसे नहीं जा रहा, प्रॉब्लम्स आपको चल रही, so that is the kind of person he was.
He studied medicine and philosophy and wrote novels and poetry as well. So he was a deadly combination. He had humanities at one hand, the other one was in the philosophy, and then he was also into the performing arts of medicine and whatnot. He was kind of an all-rounder. उसको knowledge हर perspective थी. Jack of all trades is a jack of no trades at all. मुझे ऐसा लगता है. Would you agree कि जो हर चीज़ में पंगा ले ले वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो पा रहा होता है? Is that so? और बहुत डाइवर्स किस्म की उसमें पर्सपेक्टिव आ जाते हैं. आप अग्री करेंगे कि नहीं? सब कुछ आना चाहिए? नहीं, सब कुछ नहीं आना चाहिए, अगर कोई करे तो कर भी सकता है. वो कर रहे हैं ना. That's why he is labeled, because he was doing something which was not conformist, that was not expected of a person. अगर एक पोइट था तो वो पोइट रहेगा, एक मेडिसिन का पर्सन है वो मेडिसिन की पर्सन रहेगा, एक डॉक्टर है वो डॉक्टर रहेगा, लेकिन वो सब समझना चाहता था. उसकी बहुत सारी बातें जो वो अपनी पोएम्स में लिखता है, नॉवेल्स में लिखता है, दे आर बैक्ड अप बाय साइंटिफिक नॉलेज. वह हवा में बात नहीं कर रहा, वो साइंटिफिक नॉलेज को भी यूटिलाइज करता है व्हेन ही राइट्स पोइट्री एंड नॉवेल्स. ठीक है, आगे देखें. बाय द टाइम ही एंटर्ड ऑक्सफोर्ड ही हैड ऑलरेडी पब्लिश्ड अ वाइल्डली improbable Gothic novel Zastrozzi, written a large part of another Saint Aaron, and co-authored 2 collections of verse, original poetry by Victor and Cazaire, written with his sister, continued in the Gothic mode, while Prometheus, fragments of Margaret Nicholson. अब ये सारे वर्ड्स जो इन्होंने वर्क्स बताए हैं, इनकी अगर आप पढ़ना चाहें तो इसकी समरी पढ़ सकते हैं. दे आर वेरी फेमस, बट दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट वी नीड टू नो. ठीक है, लेकिन पढ़ लें तो अच्छी बात है. आप रेफ़र भी कर सकते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं. ओके, आगे है जी. ही ऑल्सो को ऑथर्ड posthumous fragments of Margaret Nicholson with his friend called Thomas Jefferson Hogg. It was a collection of treasonous and erotic poetry disguised as the ravings of a mad washerwoman who had attempted to stab King III. Now, because he had a writer's block and he had to get some kind of royalties, he needed the money, he started writing erotic poetry. Erotic poetry क्या है? Treasonous क्या है? Treason क्या होता है? हाँ, साजिश, कॉन्स्पिरेसी, जिसमें आप ये जो ब्लू ब्लडेड और अथॉरिटेटिव लोगों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की स्कीम एंड प्लॉटिंग करें, दैट इज़ ट्रीजन. ठीक है, अगर मैं अपनी कंट्री के सीक्रेट्स, ऑल्दो मेरे पास तो है नहीं, लेकिन इफ़ आई वांट टू सेल देम टू अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू गेट सम काइंड ऑफ बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट और अदर बेनिफिट आउट ऑफ इट, दैट विल बी कॉल्ड ट्रीजन. ट्रीजन बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो इस पूरे इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में इस्तेमाल होता रहा है, जहाँ पर किंग्स एंड क्वींस के लिए जब कोई भी प्लॉटिंग एंड स्कीमिंग की जाती थी, इट वॉज कंसिडर्ड ट्रीजन. और ट्रीजन की जो पनिशमेंट थी वो सीधा सीधा हैंड टिल डेड थी, यानी सीधा ख़त्म कर दिया जाता था इंसान को. देयर इज़ नो सुनवाई. प्रूव हो गया आपने ट्रीजन में पार्ट लिया है, यू आर फिनिश्ड, यू आर डेड. ठीक है, तो ट्रीजन इज़ लाइक दैट. सो ही स्टार्टेड राइटिंग another form of poetry that was true treason, which is based on the stabbing or the planning of stabbing George III by a woman, a washerwoman. How controversial कि एक common औरत कपड़े धोने वाली है प्रॉपर्ली, वो जॉर्ज III को मारने के लिए जा रही है. तो लोगों को ये पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट था. और इरोटिक पोइट्री, वल्गर पोइट्री, सेक्शुअल पोइट्री. अब जो इरोटिक लिटरेचर होता है वो बहुत ईजीली सेल होता है. आपने कभी पढ़ा है इरोटिक लिटरेचर? वैसे कौन मानेगा, लेकिन इरोटिक पोइट्री में, सॉरी फॉर द क्वेश्चन ऑफ कोर्स, इरोटिक पोइट्री में डेफिनेटली बहुत एक्सप्लिसिटली वो चीज़ें हैं जो आप आजकल मूवीज़ और इवन सॉन्ग्स में सुनते हैं. क्या क्या कह रहे होते हैं, क्वेश्चनेबल चीज़ें होती हैं क्वेश्चन सॉन्ग्स में. आजकल सॉन्ग्स भी नहीं सुनते. लेकिन मैं उर्दू नॉवेल्स पढ़ती हूँ, इतने एक्सट्रीम का ज़्यादा वाले नहीं पढ़ती. हाँ, बट उसमें यूट्यूब पे नॉर्मली पढ़ रही है वैसे इतने ज़्यादा, बट स्टिल उसमें भी दिखता है कि जोन से भी ज़्यादा वल्गर एलिमेंट्स यूज होंगे उसके व्यूज़ एब्सोल्युटली टू द नेक्स्ट लेवल. व्हेन आई वाज के इवन जाते हैं उनके व्यूज़, और एक एक एपिसोड के एंड इज नथिंग एक न्यू वर्ड भी होता है ना, स्मार्ट. आई डिडंट नो दैट. I'll search it. अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा. मैंने लाइब्रेरी से बुक ली
थी और हर शॉर्ट स्टोरी में ये है कि अमेरिका में किस तरह क्लब के अंदर मेल एंड फीमेल जाकर इस तरह मतलब हाँ ऐसा ही है. अब आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल विच यू कैन कंटेस्ट एंड आर्ग्यू दैट दैट्स नॉट द केस. एक नावल था ये चाहते ये शिद्दतें बाय सुमेरा या अशरफ तूर समथिंग, मुझे नाम याद नहीं है राइटर का. ये उसमें आते थे वो जो मंथली डाइजेस्ट भी पब्लिश होते थे. माई सिस्टर हैज़ अ हैबिट ऑफ रीडिंग दीज मंथली डाइजेस्ट एंड एवरीथिंग. तो वो जब पढ़ रही थी तो मैंने भी नया नया उर्दू पढ़ने का एक शौक़ नहीं आता, एक लेवल होता है लाइफ का. तो आई स्टार्टेड रीडिंग एज वेल एंड टू माई सरप्राइज इट वॉज ऑल अबाउट मैरिटल रेप एंड इट हैज़ अ ह्यूज फैन फॉलोइंग. अभी भी है ये चाहते ये शिद्दतें. आप कहीं पे देखिए, इस पर कोई ड्रामा भी बना है, पाकिस्तान में बना होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें ये सारा कुछ एक्सप्लिसिटली तो नहीं लिखा हुआ था, इरोटिक तो नहीं था वो, नॉट एट ऑल, बट इट इंटेंडेड फॉर द ऑडियंसेस टू इमेजिन व्हाट कुड हैव गॉन इन दैट रूम. एंड यू नो बेटर पार्ट ऑफ द एंटायर नॉवल वॉज रिटन ऑन दिस डिस्क्रिप्शन. देयरफॉर masses वर रीडिंग इट. और उसकी सेल्स यहाँ थी, पता नहीं शुआ में आता था या आंचल में आता था, ये भी मुझे याद नहीं है, लेकिन जिस भी डाइजेस्ट में आता था वो बहुत बिकता था, दूसरा वाला नहीं बिकता था. ये जो डिटेक्टिव वाले नॉवेल्स हुआ करते थे ये नहीं बिकते थे, लेकिन ये वाला बहुत बिकता था. तो ये जहाँ पर ये लव डव हो, वो उठा के उस लड़की को ले गया और उस लड़की के साथ ये हो गया, वो वापस आई और फिर उसी से प्यार हो गया, रोमांटिसाइजिंग वायलेंस इन वन वे, इस चीज़ को पसंद किया जाने लग पड़ा था. दिस इज़ फ्रॉम पाकिस्तान ऑफ कोर्स. अब अगर हम इनकी बात करें, इरोटिक लिटरेचर वॉज ऑफ कोर्स फैंटास्टिकल वर्ल्ड में जहाँ लड़कियाँ ऐसी हैं और आदमी वैसे हैं, तो इस तरह की चीज़ें बहुत बिक रही थी. आपने जैसे खुद एडमिट किया कि आजकल जब आप देखते हो तो इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल से मटेरियल है उसके व्यूज़ कहाँ जाते हैं. छोटी सी एग्जांपल है, कोई गलत थंबनेल लगा है उस पर आपको मिलियंस में वो मिलेंगे व्यूज़, और कोई अच्छी बात बता रहा है तो 5 व्यूज़ भी नहीं दिखने आपको. ऐसा है. तो वही चीज़ थी आजकल जैसे आजकल जैसे वो थंबनेल अपने ऐसे बना लेते हैं यूट्यूब के पेज पे, तो इस वजह से उनकी फिर रेटिंग ऐसे, मतलब वो फिर लोग खोल के देखते हैं अंदर है क्या. एब्सोल्युटली. मैम न्यू जो राइटर्स हैं ना, अपकमिंग राइटर्स, मेरी हैबिट वाली खुद ही बाय 10th स्टैंडर्ड, सो तब से मैं देखती हूँ. एंड तब तो मतलब थोड़ा लिमिट में होता था, अब तो लिमिटलेस हो गया. एंड अगर कोई न्यू पेज स्टार्ट करता है तो उसकी पब्लिसिटी के लिए जस्ट, और आप कह रहे हैं प्रमोट करने के लिए, वो थंबनेल्स और फ्रंट कवर वो ऐसे बनाते हैं ना कि मतलब उनको देख के लाओ पढ़ ले, एंड उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो. सो दिस इज़ व्हाट द स्ट्रैटेजी वाज टेकन बाय शेले. या तो ट्रीजन पे लिखूंगा या इन चीज़ों पे लिखूंगा जिसमें लोग इंटरेस्टेड है. गॉसिप सबको पसंद है, नो मैटर हाउ फ्लैटली यू रिफ्यूज़. गॉसिप सबको चाहिए, सबको कंट्रोवर्सी चाहिए, सबको पता लगना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं. सो मे बी now this is my personal interpretation and understanding, Shelley lived a controversial life so that he could stay in the news, and the fact that the women of that era loved this controversial personality. Do you like controversial people? No. I am scared of them. I don't want to be associated with them. Later on पता चले सब कहें तुम भी ऐसी हो, तुम्हारा भी. They are not trustworthy at all. बिल्कुल. अच्छा, are we trustworthy? The people who are not labeled as, you know, controversial, how do you know that I'm not controversial internally? Externally मैंने अपना एक ऑरा रख रखा है, मैं ऐसी हूँ, मैं तो बहुत सीधी हूँ, किसी को क्या पता अंदर में कैसी हूँ. तो यूजुअली ये है कि लाइक दूसरों को तो नहीं, लेकिन जो आपके आसपास है, आपकी लाइक सर्कल है, उसमें तो फिर ऑब्वियसली पता चल ही जाता है कि कैसे है. समटाइम्स नहीं पता चलता, पता चल जाता है, नहीं पता चलता. यूजुअली चल जाता है, ट्रस्ट इश्यूज पता नहीं चलता. ठीक है. तो यही ट्रस्ट इश्यूज और ये प्रॉब्लम्स, कंफॉर्मिटी एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, एंड इलिजिमेट चिल्ड्रन एंड हैविंग इलिसिट रिलेशनशिप्स, हैविंग चिल्ड्रन आउट ऑफ वेडलॉक्स, एंड पता नहीं क्या कुछ सारे evils of the society were going on. And in the middle of it, Shelley was, you know, becoming a mad Shelley. He was doing all sorts of nasty things he should not have. Anyway, आगे देखें. In his second term at Oxford, Shelley turned to philosophy. ठीक है, to philosophical concerns with the necessity of atheism, a pamphlet challenging theological proofs for existence of God. तो उसने अपनी यूनिवर्सिटी में प्रूफ ऑफ गॉड के लिए एक किताब या एक पम्फलेट लिख दिया, दैट टेल मी, प्रूव इट टू मी दैट देयर इज़ अ गॉड.
सो आपको क्या लगता है क्या रिएक्शन आया होगा? आगे से नहीं देखना, वैसे बताएं इन्फर करना है व्हाट कुड हैव बीन द रिएक्शन ऑफ मासेस. कुछ इसके साथ में खड़े हो गए होंगे, कुछ इसके अगेंस्ट हो गए होंगे. एब्सोल्युटली ऐसा ही है. ठीक है. टीमिंग अप विद हॉग published the tract distributed to the conservative clergymen and nuns of Oxford. यानी ऑक्सफोर्ड में जो authoritative figures थी who were considered or deemed to be authority and knowledgeably enough in the standing who can actually contest and provide such a proof, he sent these pamphlets to those people and challenged them to a debate instead. उसने बस लिख के पम्फलेट हवा में उठा के फेंके नहीं. उसने कहा कम, आई एम चैलेंजिंग यू टू अ डिबेट, लेट्स हैव दिस philosophical debate on the existence of God, whether it is there or not. That tells us that he wants a death wish. पाकिस्तान में तो उसको death wish ही है, he wants to die. ऐसा ही है ना? Instead हमारे जो neighboring country है हिंदुस्तान, he has the same. They are going through the same shit. बल्कि मतलब एक दूसरे का मोबाइल प्रोडक्ट है ना दोनों कंट्रीज. तो मैं कह रही हूँ कि जितना इन दोनों कंट्रीज में ये चीज़ है ना, इतना शायद दुनिया के और किसी मुल्क में. अगर हमारे पास रिलीजन बेस्ड एक्सट्रीमिज्म है ना, तो बाकी वर्ल्ड में कलर बेस्ड एक्सट्रीमिज्म है, कास्ट एंड क्रीड सिस्टम है, पता नहीं प्रॉब्लम्स हर जगह. इट्स जस्ट दैट वी आर हाईलाइटेड मच, वरना प्रॉब्लम्स उनके भी इक्वल लेवल के प्रॉब्लमैटिक लेवल पर हैं, बट हमें लेबल किया जाता है. अब देखिए ना, द चाइल्ड हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ अ बायोलॉजिकल फादर एंड देन ही हैज़ अ फादर हु brought him up, and then he has a father who adopted him, and पता नहीं क्या कुछ. अब ऐसा बच्चा जो इतने सारे चेंजेस, these are drastic changes, तो इसलिए वो बच्चा बहुत एक्सपीरियंस्ड भी है, बहुत आगे है हमारे वाले बच्चों से. ऑफ कोर्स विल टेक इट एज अ नेगेटिव लाइट, क्योंकि हमारे माशरे में, हमारे रिलीजन में और सोसाइटी में इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, बट वो डिफरेंसेस फिर आ जाते हैं. एनीवे, इंस्टेड शेले एंड हॉग वर इमीडिएटली एक्सपेल्ड इन मार्च 1811 and even that estranged Shelley from his family. Of course, your family put an effort, they sent you Oxford, and this is what you get out of it, you get expelled. तो family ने shame और ये सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए अपने टाइज उससे ख़त्म कर ली. Underrated by the fact that he had no financial support until he came of age, in 1811 he eloped to Scotland with Harriet Westbrook, a 16-year-old schoolmate of his sister's. For 3 years they moved around England to avoid creditors. At the same time they became actively involved in political and social reform in Ireland and Wales. So the girl that he had in life was equally involved in political and social problems that were being created all along. Writing radical pamphlets in which Shelley set forth his views on liberty, equality and justice. He and Harriet enthusiastically distributed these tracts among the working classes, but with little effect. The year 1814 was a pivotal one in Shelley's personal life. Despite their faltering marriage, he remarried Harriet in England to ensure the legality of their union and the legitimacy of their children. Even the girl that he eloped with, उसको भी legitimize करने के लिए he took a lot of years. ठीक है? So although he wants law, although he wants political stability, but if we talk about him, he is not following the protocols himself as well. ठीक है, लॉ है ना दैट यू हैव टू रजिस्टर योर मैरिज, यू हैव टू रजिस्टर एक्सेट्रा, पर वो खुद भी ये कर नहीं रहा बिकॉज ही इज ऑलवेज अ फ्यूजिटिव, ऑलवेज ऑन द रन. Unfortunately for Harriet, Shelley became a frequent guest of the radical English philosopher William Godwin, whose book Political Justice greatly influenced Shelley's political ideas. Shelley fell in love with Mary Godwin, the 16-year-old daughter of Godwin and his first wife, the feminist author Mary Wollstonecraft, and they eloped too. So you see, पहली बीवी मैरी है, सेकेंड वाइफ इज़ हैरियट, दोनों के साथ एलोप किया और फिर बाद में जाके हैरियट को लीगलाइज एंड लेजिटिमाइज किया गया. Classes on 27, 1814. Upon Shelley's return to England, he entered into a financial agreement with his family that ensured him a regular income. When Harriet declined to join his household as a sister,
He provided for her and their 2 children but continued to live with Mary. See, he said, उसकी second wife को, second affair को उसने कहा कि come live with us as my sister. He had no respect for the basic, we can say, relationships. Of course, एक basic understanding है. अब हम वही बात है ना, he is a mad Shelley. He didn't care about कि क्या बायोलॉजिकल और क्या सोशल टाइज आप बनाते हैं और उनके क्या रेपरकशंस आप होते हैं. आपने अ डॉल्स हाउस पढ़ा हुआ? नहीं, मॉडर्न ड्रामा नहीं है, अभी नहीं है. उसमें भी ना आप हेनरी गिब्सन को पढ़ेंगे तो उसमें एक पेट्रियार्कल आदमी दिखाया जाता है, टॉवल. वो अपनी वाइफ को सारी ज़िंदगी एज अ वाइफ ट्रीट नहीं करता, एज अ डॉल ट्रीट करता है. और एंड में जब वाइफ उसे छोड़ के जाने लगती है तो कहते हैं कोई बात नहीं, वी कैन लिव विद एज लिव टुगेदर एज ब्रदर एंड सिस्टर. सो ये थोड़े से ना आदमियों का कोई हाल नहीं है. तो यहाँ पे भी यही सेइंग दैट कम लिव विद मी एज माई सिस्टर. सारे ही हैं, ऑल ऑफ देम समहाउ. मुझे ऐसा भी लगता है कि अब ये बिल्कुल पर्सनल है, ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, कि ये जान के भी किया जाता था इन ऑर्डर टू स्टे इन द न्यूज़. कि हमको रहना है, हमें जानो, हम पागल हैं. अब तो करते ही ये हैं. Now people don't want to be known for their actual art. They want to be known for the controversies that they can create. है ऐसा है, और ऐसा एकेडमिया में भी है बाय द वे. ठीक है. Anyway, so he asked her to live with him as a sister. कि मैं मैरी और मेरे मैरी के साथ जो बच्चे हैं उनके साथ रहूँगा, तुम अपने बच्चों के साथ आगे मेरी बहन की तरह रहना शुरू. सो अपने बच्चों को भी अपना. ये गॉडविन की बेटी हैरियट को बोल रहा है? हैरियट नहीं, मैरी गॉडविन की बेटी है. हैरियट इज अनदर वुमन दैट ही गॉट मैरिड टू, इज द सेकंड वाइफ. वाइफ बाद में बनेगी वो, पहले वो वैसे ही उसके साथ इलिजिमेट रिलेशनशिप में और बच्चे भी होते हैं उसके. ठीक है. इन द समर 1816 वाइल ट्रेवलिंग इन यूरोप. आपने देखा है हमें कितना इंटरेस्ट आया है उसकी ऐसी पैथेटिक लव लाइफ में. बाकी सारी चीज़ें हम थोड़े से परेशान होके सोच रहे हैं कि ठीक है ये था वो था, लेकिन ये है तो हम सब बोल पड़े. आपके चेहरे पे एक ना एंथुजियाज्म मैंने देखा है. तो कंट्रोवर्सी हमें भी पसंद है. In the summer of 1816, while traveling in Europe, Shelley met Lord Byron and developed an enduring friendship that proved an important influence on the works of both men. Lord Byron was equally controversial, and he was considered beautiful, and he was a womanizer as well. There were many women who would kill each other to be with Lord Byron. तो उसकी दो दोस्त भी थे, वो भी ऐसे ही थे. Lord Byron की एक पोएम भी है जिसमें वो लिटरली एक मैरिड औरत के बारे में बाद में पता भी चल जाता है, उसका पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. आई थिंक इट्स कॉल्ड व्हेन वी टू पार्टेड. तो बड़ी कंट्रोवर्शियल सी पोएम है. उसे जानबूझ के कंट्रोवर्शियल बनाया गया ना कि लोगों को इंटरेस्ट आए कि ये किस बारे में. तो इस तरह का राइटर भी था, इरोटिक लिटरेचर था, ट्रीजन पे बेस्ड था. इस सब के अंदर अंदर वो अपनी आर्टिस्टिक स्टेबिलिटी भी चाहता था. लेट्स सी व्हाट ही डज फॉर दैट. शॉर्टली आफ्टर Shelley's return to England that fall, Harriet, out of mental sickness, drowned herself in Hyde Park. Shelley took advantage of the situation and legalized his relationship with Mary on December 30. पहले उसने हैरियट के साथ लीगलाइज किया. जैसे ही हैरियट गई, चलो अल्लाह हाफ़िज़, अब मैं मैरी के साथ इसको लीगलाइज करता हूँ जाके. He sought custody of his children by Harriet, but Westbrook family successfully blocked him in the lengthy lawsuit, convincing the court that Shelley was morally unfit for guardianship. In 1818, would you agree that a father like this should not be given custody of the children? क्योंकि वो फिर वही चीज़ें वो हम कहते हैं ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाइक फादर लाइक सन लाइक डॉटर लाइक मदर. सो देर वॉज अ पॉसिबिलिटी कि जो बेटी होती उसको वही मेंटल सिकनेसेस एंड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और बेटा जो वो वैसे बन जाता. तो पूरा लॉफुली उन्होंने ये कस्टडी बैटल उनकी चली और उसमें ही लॉस्ट द चिल्ड्रन. In 1818, Shelley relocated his family to Italy, spending time in Leghorn, Venice, Naples, Rome, Florence, Pisa, and Lercy. Shelley and Byron, who was living in Italy, also became the nucleus of circle of expatriate writers that became known as Satanic School. नाम देखें आप, Satanic है Saturn से निकला. Who's a Saturn? कौन है? शैतान. बेल्ज़ेबब, इसकी पूरी एक आर्मी है लूसीफर की, उसमें ये सब होते हैं. तो
आप सलमान रश्दी को जानते? Salman Rushdie? No? He has written a very controversial book called The Satanic Verse. तो बहुत ही controversial है आप, और वो उसमें हमारे ही religion की बात कर रहे हैं. नहीं पता आप लोगों को? चलिए अच्छी बात है. No knowledge, no problem. Because of their जब ये चीज़ें पता चलती हैं ना, that create a very big we can say a space in your mind to read more about it. Do you think you'll go home and check out who's Salman Rushdie? करेंगे? करिएगा. पता होना चाहिए ना थोड़ा बहुत कि क्या चल रहा है. हम क्या करते हैं कि we are so indulged in the पुराना वाला writers that we have got no clue what the new writers are doing, है ना? बहुत ही कम पता है. थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. Because of their defiance of English social and religious conventions and promotion of radical ideas in their works. Despite the death of his 2 children and a disintegrating marriage, Shelley was generally content in Italy. देखिए किस तरह का psychopathic तो नहीं, sociopathic कह सकते हैं, that he had gone through much problems, but he's okay, he's content, he can live with it. Recently, when I was reading Mohsin Hamid's novel called The Exit West, उसमें 2 characters हैं, Nadia and Said. Said has a panic attack. He goes through normal human feelings when you're going through torture and everything. Nadia doesn't cry in the entire novel. She doesn't care. So she's the representation of the modern woman, that she can go through hell and she still won't care. तो वही मॉडर्निटी इनके राइटअप में भी थी और इनके लाइफस्टाइल में भी थी कि दे वांटेड टू जस्ट कट टाइज विद ऑल दैट वाज देयर इन द पास्ट, ऑल्दो दे वर सेंसिटिव. अभी हमने पढ़ा दैट ही वाज एन इडियोसेंट्रिक सेंसिटिव नेचर राइटर, ही वाज, बट इन पर्सनल लाइफ वो इस कंक्लूजन पे इसके बाद ही पहुंचा व्हेन ही वेंट थ्रू ऑल दीज हार्डशिप्स एंड अप्स एंड डाउन्स. Okay, but their boat capsized. Companion Edward Williams set sail from Italy, but their boat capsized in a sequel off the coast to Leicester. 10 days later, their bodies washed ashore. Shelley's body, identified by an open volume of John Keats' poems found in his pocket, was cremated on the beach in the ceremony conducted by his friends Byron Lee Hunt, Edward John Trelawny. His ashes were buried near Keats' grave in the Protestant cemetery in Rome. So he had a tragic death in the end. He was drowned. So this was a little more extensive understanding of the poet. I hope you've understood. कुछ आपको बेहतर और कुछ पता चल गया है शैले के बारे में. अच्छा, do you have the text with you? Let's look at the text. और next class में हम interpretation भी देख लेते हैं. Ode to the West Wind by Percy Bysshe Shelley. As you can see, अगर आप एक रफ सा लुक देखें तो there are 5 sections of the poem. In many places you'll see that they call these sections as stanzas. In many sections they call them as cantos, C-A-N-T-O, cantos, ठीक है. And then in some places I've seen another word. I'll search it out and I'll tell you in the next class. I forgot the name. हमने इसको कैसे लेके चलना है? Let's decide one that we'll call it a stanza. One section, a stanza, so that we have a unanimity कि हम सब एक ही चीज़ लेके चल रहे हैं, ठीक है. Otherwise, within one stanza we have other stanzas as well. As you can see, 3 lines for each. First 4 stanzas and then there is a couplet. Couplet क्या होता है? 2 lines, ठीक है. पहला stanza देखते हैं. अब हमने एक background knowledge build कर ली है mind में. Somehow we have understood what went on and why he was writing like this. We also read about the introduction to the poem. So let's see, what do you understand by the first stanza yourself. O wild west wind, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanter fleeing, yellow and black and pale and hectic red, pestilence-stricken multitudes, O thou who chariotist to their dark wintry bed, the winged seeds where they lie cold and low, each like a corpse within its grave, until thine azure sister of the spring shall blow her clarion over the dreaming earth and fill
driving sweet buds like flocks and feed in the air, with living hues and odors plain in the hill. Wild spirit which art moving everywhere, destroyer and preserver, here, oh, here. क्या समझ आई? एक दफ़ा और देख लीजिए. So first stanza is called, let's look at the text. O wild west wind, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanted fleeing. Yellow and black and pale and hectic red, pestilence-stricken multitudes, O thou who chariotest to their dark wintry bed, the winged seeds where they lie cold and low, each like a corpse within its grave, until thine azure sister of the spring shall blow her clarion over the dreaming earth and fill, driving sweet buds like flocks of feed in air, with living hues and odors, plain and hill, wild spirit which art moving everywhere, destroyer and preserver, here, oh here. So these words, for example, O wild west wind, O here and here, this simply tells us, retells us that the poet is addressing the wild west wind, and he wants to talk to the wild west wind that this is what you do, this is what you are going to do as a destructor and a preserver. I told you some division, I think in the last class as well, where we talked about that nature can be a friend, a foe, a destructor and a preserver as well, right? यहाँ पर same binary use हो रहा है जो आपके mind में होना चाहिए. Now look at the poem summary, line 1 to 14. Now first 14 lines are summarized in this particular section. It's from the Gale study and I'm going to read it for you, and then we can have a line-wise summary as well. In the first of the 5 sections of the poem, the speaker begins to define domains and powers of the west wind. West wind is a forceful wind. It has power and it's coming from the west. Apparently आपको ये बात समझ आ रही है. Other than this, you have to think of this wind as something, a purgification, a purification, a wind of purification for the poet. He wants to purify himself and get rid of all those blurriness and second-hand mindedness where he is always second-guessing himself. If you remember, in his personal life, he was going through a lot of ups and downs, and he was not getting enough inspiration and muse to write the poetry. Now he wants that blurriness of his imagination or the stagnation in his poetic art to go away, and he wants to move forward, and he's asking and he's praying to the west wind, O wild west wind, do this for me and that. We'll see what he says further. While stanza 2 addresses the wind's influence on the sky, and stanza 3 discusses its effects on the sea. If you remember, we also talked about how the entire poem is going to be based on sky, earth and sea. These 3 natural phenomena are going to be focused, and in the very first 3 stanzas we are going to talk about all these 3 perspectives. The autumn breeze scatters dead leaves and seeds on the forest soil, where they eventually fertilize the earth and take root as new growths. So rebirth, regeneration, automatic regeneration, these perspectives and ideas are going to be prevalent in this particular first section of the poem, first stanza of the poem. Both destroyer and preserver, which is in line 14, the wind ensures the cyclic regularity of the seasons. Seasons are important. Each season has something to offer. Spring has something else to offer. Autumn is for another thing, and etc. and etc. And he's going to focus on these naturalistic phenomena in order to highlight what he feels inside and outside at the same time. If you remember, I might have told you that this poem has to be looked at from 2 basic perspectives. One is the surface level, where we have nature description, we have words and natural phenomena being depicted. The other one is the personal growth and stagnation and the problems and the personal problems and deep problems that the poet is going through as a poet and as an individual as well. And of course, romantic era mein jo usne problems identify kiye the, that are going to be part of the interpretation as well. So this poem at large is a dualistic poem having 2 levels of interpretations. One is the surface level, the other one is the deep level, which could have multitude layers of meanings attached to it. These themes of regeneration and the interconnectedness of
death and life. See, when the leaves, they are, पतझड़ का एक मौसम होता है, when the leaves are dead, they are lying on the floor. That is the season of where these leaves are not alive anymore. Then the spring comes along and it brings the liveliness, the life back to these places. ठीक है, वो जो different colored पत्ते ज़मीन पे पड़े हुए हैं वो वहाँ होते हैं और उसको वेस्ट विंड बहा ले जाती है, वेस्ट विंड उनको उड़ा कर ले जाती है एंड नए पत्तों के लिए जगह बनती है. एंड दैट इज़ हाउ लाइफ वर्क्स एज वेल. अगर हम एक पूरी फैमिली की बात करें तो बड़े मरते हैं, फिर अगली जनरेशन आती है, फिर अगली जनरेशन जाती है तो उससे अगली आती है, उससे अगली आती है, तो एक साइकिल चल रहा है. जनरेशन में क्यों कह रही हूँ कि ताकि हम एक फैमिली को लेके चलें. इसी तरह सिविलाइजेशन ऑल्सो वर्क द सेम, राइट. एक सिविलाइजेशन में सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रैक्टिसेस होती हैं, वो इवेंचुअली दे डाई ऑफ, दे फेड अवे एंड देन द नेक्स्ट सिविलाइजेशन ब्रिंग्स इन डिफरेंट चेंजेस. फिर वो चली जाती है तो फिर और चेंजेस आते हैं. तो दैट इज़ द रीजनरेटिव एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ लाइफ विच इज़ बीइंग डिपिक्टेड थ्रू द इमेजरी ऑफ falling leaves and they are lying on the earth itself, and the wind is playing its part to purify them by blowing it away. आगे देखिए, these themes of regeneration and interconnectedness of death and life, endings and beginnings run throughout. So this binary of one perspective as compared to the other one, for example, life versus death, ending versus beginning, right? This binary is going to be prevalent throughout in the interpretation of the poem. Ode to the West Wind. The wind is, of course, more than simply a current of air. In Greek and Latin, languages with which Shelley was familiar, the words for wind, inspiration, soul and spirit are all related. Any idea ये कैसे related हो सकते हैं? Wind, inspiration, soul and spirit. अभी मैंने आपको बताया भी है लेकिन इन्हीं वर्ड्स में नहीं बताया. क्या 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 इंटरकनेक्टेडनेस है इन चारों वर्ड्स में? So the interconnectedness, that's fine. Wind is the muse, the inspiration, and that is purifying his inner soul, his art and craft, and definitely his spirit as well. A poet कैसे joyful होगा जब वो actually poeting कर रहा है, यानी poetry लिख रहा है. वो आजकल आप यूज़ करते हैं ना, the brain is not braining. तो अगर poeting हो रही है, so he's definitely he's feeling inspired through the wind. That's why these four words, they are related. And Greek and Latin mythology अगर हमें पता होगी तो हम ये समझ पाएंगे. जैसे paganism था, hedonism था, natural phenomena को gods माना जाता था कि wind है तो उसके साथ ये आता है, fire है तो ये है, earth से हमें ये मिलता है, पानी से हमें वो मिलता है, हर चीज़ की तो वो पूजा करते थे. तो ये representation, ये connection भी बन सकता है. Okay. Shelley's West Wind seems to symbolize an inspiring spiritual power that moves every way and affects everything. Do you see the similarity of eco-criticism over here? Where in eco-critical perspective, everything in our surrounding affects everything around it. Now यहाँ पे spirit भी है, यहाँ पे imagination भी आ गई है. Lawrence Boyle जो एक eco-critical critic है, वो इस perspective की बात करता है कि environmental imagination is also real. If you can imagine about environment, then you are having an environmental consciousness, and therefore you are an eco-critical, thoughtful kind of a unique person who can think about it. तो क्या हम Shelley को कह सकते हैं कि he is able to co-join the inner self with the outer self with respect to his life, nature and all the happenings around it. Eco-critical perspective भी यही है ना कि physically impact भी हो रहा है, इमोशनली साइकोलॉजिकली भी हो रहा है और इन्वायरमेंटली तो उसमें डेफिनेटली हो ही रहा है. तो इन्वायरमेंटल इमेजिनेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल टू द पोएट शेले. इस पर बहुत सारे आपको आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं. देन लाइन नंबर 2 to 3. लाइन 2 में आपको मैं पढ़कर बता देती हूँ. Thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from the enchanter fleeing. यहाँ ghosts का क्या जिक्र हो सकता है? Any idea before we read from the interpretation? Ghost क्या होते हैं? Supernatural entities.
That also comes under the umbrella term of romantics being Gothic writers. They were very much interested in Gothic literature and supernatural phenomena. So they used the word ghost in order to give this poem a supernatural touch that makes this poem a romantic poem in all perspectives. The lines suggest that the sorcerer might frighten away spirits, the wind scatters leaves, but one might also interpret dead leaves as forgotten books and ghosts as writers of the past, in the sense that the winds of inspiration make a way for new talent and ideas by driving away the memories of the old. The concept that we just discussed, that civilizations and their traditions and their practices, they fade away, and the new civilizations, new generations, they bring in their new practices. So perhaps this particular lines, second and third line, can be taken as these dead leaves can represent all those poets, those dead poets who are not finding their inspiration. That could be correlated to his autobiographical perspective over here, that Shelley himself was not able to find the inspiration, therefore he found these dead leaves as equal to himself, as a forgotten writer who is not able to move forward. एक राइटर के लिए उसका फ्यूल क्या है? उसका राइटअप जितना अच्छा होगा उतना अच्छा वो माना जाना जाएगा. सो दीज टू इंटरप्रिटेशन, एक सरफेस लेवल पे इंटरप्रिटेशन क्या है कि डेड लीव्स हैं, ऑटम हमारे पास सीजन है और हवा उनको ले जा रही है, दैट्स सरफेस लेवल, ठीक है. बट दोज डेड लीव्स कैन ऑल्सो represent those forgotten figures from the past, the poets, the philosophers who were not able to make an impact in the history whatsoever. So this representation is the dualistic interpretation of this particular lines. Then we have line 4 to 5. Fourth line is yellow and black and pale and hectic red, pestilence stricken multitudes, O thou. Pestilence क्या होता है बेटे? Pest, या pesticide से निकला है, यानी बीमारी, disease. Pestilence stricken यानी इस disease से influenced या बर्बाद शुदा, something like that. You have to think like that कि उसने उसको destroy कर दिया है, strike कर दिया है. Pestilence has stricken this person. Anyway, line 4 to 5. The colors named here might simply indicate the different shades of the leaves. Now when the leaf is attached to its branch, it's green. Then the autumn comes along and they die, they fall off the ground and then they change colors. So all those colors can be associated with color theory, which represents a lot of multifaceted perspectives of understanding. Okay? But it is also possible to interpret the leaves as a symbol of humanity's dying masses. When we die, when a human dies, कौन सा कलर होता है सबसे पहले? जो कलर है यूजुअली, अगर आप कोई बहुत ही अनसर्टन वे से, बहुत ही अजीब तरीके से नहीं मरे हैं, तो आप जो पेल कन्वर्ट होते हैं उसमें भी 12 आवर्स से ज़्यादा लगता है. फॉर एग्जांपल मेरा कलर तो है ही पेल, आई हैव स्किन इशूज़, सो इट्स नॉट अ नॉर्मल कलर. अगर किसी की स्किन ठीक हेल्दी स्किन है, इफ़ वी टॉक अबाउट दैट स्किन, तो वो एक कलर में होती है, हम उसको स्किन कलर ले लेते हैं, ठीक है, वी कॉल इट स्किन कलर. स्किन कलर के बाद द पर्सन इज डेड, द ब्लड इज़ नॉट फ्लोइंग एनी मोर. What happens? Either they turn red or bluish red is there. Some purplish color is there if it is more than 24 hours. What happens next? It turns or it moves towards blackishness. वो बिल्कुल black होना शुरू करता है, ठीक है. So ये colors जो change हो रहे हैं क्या represent कर रहे हैं? A cycle, a process. यही एक civilization जाती है, fade होती है, एक perspective, एक थॉट प्रोसेस, एक ट्रेडिशन जाता है तो नया ट्रेडिशन आता है. सो उस लाइफ साइकिल की यहाँ पे बात हो रही है. इन दिस एनालिसिस द कलर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट कल्चर्स एज वेल, सच एज एशियन, कॉकेशियन, नेटिव अमेरिकन्स, अफ्रीकन एंड एक्सेट्रा. ऑल ऑफ अस, we are maybe 15 to 20 people right now, all of us have different skin colors, although we are from the same cultural backgrounds and mostly we are from Pakistan. I think all of us are from Pakistan. लेकिन कलर का डिफरेंसेस है ना, और कलर की डिफरेंसेस की बेसिस पे हम लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं. स्पेशली रेसिज्म इन द वेस्ट इज़ वेरी कॉमन, यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट. Black movement was there. If we have religious extremism, then they have color extremism. They have caste and creed and everything. We also have caste and creed and everything.
So different cultures, they are represented through different colors over here. So this color scheme that the poet has introduced, first level is where we are just talking about the autumn leaves that they change colors. The second is that human life, when it is gone, it also changes. And the third is different cultures are being represented. So यहाँ ये dualistic नहीं रह जाता, ये tricyclic perspective की तरफ चला जाता है, यानी 3 cycles आ जाते हैं. Surface level, which is the leaves changing colors. Second is human, how the human changes color when he or she is dead. And the third one is the different cultures being represented. देखिए, west wind doesn't care about your culture. विंड जब आती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ब्लैक हैं, पिंक हैं, ब्राउन है, वाइट है, सुप्रीम वाइट है, ये वाला वाइट है, वो वाला वाइट है, आंडा वाइट है कि आइवरी है. दे डोंट केयर. विंड इज़ very neutral to all kinds of cultures. Death is very neutral to all kinds of people. Yes? The autumn leaves, they really don't care कि हम ऊपर वाली शाख से गिरे थे कि नीचे वाली शाख से, सब गिरे हैं और सब ने रंग चेंज करना है. That is what the point is. Politically, शैले क्या कहता था कि जो पॉलिटिक्स है, it should be meant for everybody, for all levels of the society. सोसाइटी लेवल पे इम्पॉर्टेंट है ना कि अगर रिप्रेजेंटेशन एलीट क्लास की है तो लोअर क्लास की भी हो, मिडिल क्लास की भी हो, हर सिस्टम की हो. तो आप इसको उसके साथ भी रोमांटिक आइडियलिस्टिक नेचर जो हम इसके बायो में पढ़ चुके हैं उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं. दैट द वेस्ट विंड इज न्यूट्रलाइज टू ऑल दीज कलर्स, कल्चर्स एंड ह्यूमन साइकिल. The idea is supported by the phrase, each like a corpse within its grave in light 8, that could indicate that each person takes part in the natural cycle of life and death. ऐसा ही है ना, बेशक मैं कॉकेशियन हूँ, एशियन हूँ, अफ्रीकन हूँ, अमेरिकन हूँ, आई हैव टू डाई एंड देन द नेक्स्ट जनरेशन हैज़ टू कम. बेशक मैं इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हूँ और इस कल्चर से हूँ और वो उस कल्चर से, सब कुछ एक ही है. वेस्ट विंड के लिए एक ही है. दे डोंट केयर. अच्छा, as you can see, we are talking about line 4 and 5, but there is a direct connection to line 8 over here. So the poem is complex and complicated in the manner that whatever is said can be associated to something that is coming your way, and whatever is coming your way can be associated with something that we already have discussed. अगर line 8 से connection है तो line 8 का 4, 5 से भी connection है. So it's very complicated in that manner. So we can't take the poem for the line perspective या एक section को अलग से नहीं ले सकते. सब कुछ हर चीज़ से connected है. That is the complexity and beauty of romantic poetry at the same time. Although there are controversies and different perceptions and interpretations available, some of the writers, some of the scholars, they would like to read the poems separately. जैसे हमने कुबला खान जब पढ़ी थी, ठीक है, उसको भी पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं. बिकॉज वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से उसे समझने की कोशिश की है. तो पर्सपेक्टिव्स और बहुत सारे हैं. इफ़ यू रीड फ्रॉम समवेयर एल्स यू माइट फाइंड अनदर पर्सपेक्टिव एज वेल, बट इतना भी आ जाए, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू एट दिस लेवल. देन लाइन 6 to 7 देखिए. Who chariotist to their dark wintry bed, the winged seeds where they lie cold and low. This they refer to the, दे किस चीज़ का रेफरेंस है? लीव्स का रेफरेंस है ना. वो दे आर लाइंग ऑन द ग्राउंड कोल्ड एंड लो. पहले वो हाई मल्टीट्यूड पे थे, हवा में थे, दरख्त के साथ थे और ज़मीन पे नहीं थे. नाउ दे आर इन द ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. ठीक है, तो इस लाइन की फोर्सेबल इंटरप्रिटेशन 67. हियर द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज अ चैरियट. चैरियट क्या होता है? कार्ट, बग्गी टाइप. यस, जिसमें सामने कोई एनिमल होता है और पीछे कार्ट होता है. यस. Here the wind is described as a chariot that carries leaves and seeds to the cold earth. अच्छा. Now the representation, if you remember, we are supposed to focus on earth, sky and sea. अब हम earth की बात करते हैं. Wind का involvement है इसमें कि this is a carrier, ठीक है, chariot की तरह wind, and it brings the seeds to the cold earth. This comparison gives the impression that the wind had some of the aspects of those who are associated with chariots, gods and powerful rulers. अच्छा, gods and powerful rulers. अब आपने इस god को उस तरह नहीं सोचना जैसे हम अपने खुदा को समझते हैं. आप इन gods को ग्रीक मिथोलॉजी, हिंदी मिथोलॉजी, हिंदी रहने दें, रोमन मिथोलॉजी में सोचें. किसी god के बारे में पता है? God of thunder कौन है? God of lightning, Theodore.
थियोडोर इज़ देयर, डॉक्टर कह रही हूँ, डॉक्टर ज़्यूस तो सिंगर है, गॉड ज़्यूस इज़ देयर, ठीक है ना, डॉक्टर ज़्यूस इज़ अ सिंगर आई थिंक, आई डोंट नो, आई मिक्स इट अप। फिर हमारे पास फीमेल गॉडेसेस हैं, एफ्रोडाइट है, ठीक है। सारे गॉड्स के अपने अपने एट्रीब्यूशंस हैं और सारे गॉड्स कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं। सेम गोज़ फॉर रूलर्स, वी हैव डिफरेंट रूलर्स एंड एवरी रूलर हैज़ समथिंग डिफरेंट टू ऑफर। दे हैव पावर to bring in the change in the masses and their livelihoods. Is that correct? Gods के हाथ में भी है और rulers, leaders के हाथ में भी है। अगर एक leader सीधे रास्ते पे चलता है, उसके लोग सीधे रास्ते पे चलते हैं। अगर एक leader ही सही रास्ते पे नहीं चलता तो उसके लोग भी फिर उसी तरह के, वो होता है ना कि जैसा लीडर वैसी रयाया, या जैसी रयाया वैसा लीडर। इट्स अ टू वे प्रोसेस, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। हम कैसी रयाया हैं, जैसे हमारे लीडर्स हैं, और हमारे लीडर्स कैसे हैं, जैसे हम हैं। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट्स नॉट अबाउट जस्ट दैट वी आर oppressed or we are the victims, it's equal. Would you agree with that? Yes. West Wind is like that. It's equal in each perspective. It doesn't care about कि ये हावी है कि वो हावी है, it's both things, ठीक है। आगे देखिए लाइन 8, Thine azure, sister of spring shall blow. The leaves are personified as people within graves, an image that harkens back to lines 4 and 5. The leaves are considered as diseased multitudes of people. See, the colors that they have mentioned earlier represent different people of color, and of course the cycle of life and death, and the fact that they have used the word pestilence stricken also represents all multitude levels of diseases that were there. Now these diseases can be associated with those diseases which were prevalent, the plagues in romantic era, ठीक है। वो plagues आए, west wind आई, changes आए, और उन plagues पे उन्होंने रोकथाम भी कर ली, ठीक है। later on they came out of it, लेकिन for a time, for a long time, many people died because of those things. That representation and image is being depicted over here. Then lines 9 to 12. Her clarion over the dreamy earth and fill, driving sweet paths, the flocks of feeding air with living hues and adores plain and hill. In Greek and Roman mythology, the spring west wind was masculine. आपको क्या लगता है कि जो भी नेचुरल फिनोमिनाज है ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? अब हवा चल रही है कहते हैं ना, हवा चल रहा है हम नहीं कहते। तो हमारे लिए हवा फेमिनिन है, बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, पानी हमारे लिए मैस्कुलिन है ना। तो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, वर्ड चॉइसेस के डिफरेंसेस हैं, मुज़क्कर मुअन्नस के डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे वर्ड लेवल पे तो है ही हैं, कल्चरली भी हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर भी। जैसे किसी और लैंग्वेज से जो शख्स आता है, अफ़गानी स्टूडेंट्स हैं मेरे या पश्तो स्टूडेंट्स हैं, वो का और की में डिफरेंस लाते हैं। अब तो नहीं लाते, अब तो बड़ा चेंज आ गया, इट्स वेरी क्लियर नाउ, बट एक पॉइंट पर था कि वो का की के में डिफरेंस मिस्टेक कर लेते थे, बिकॉज मे बी उनकी नेटिव लैंग्वेज में वेरिएशन में इट्स अ लिटिल डिफरेंट, ठीक है ना। इन ग्रीक एंड रोमन मिथोलॉजी, इसके बारे में आप चाहें तो यूट्यूब पर भरमार है वीडियोस का, एक दफ़ा देख ही लें, क्योंकि ग्रीक एंड रोमन मिथोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। एक दफ़ा सुन ही लें कि क्या चल रहा है। बहुत वॉर एंड डेथ है, बहुत ग्लोरिफिकेशन है, एक दूसरे को मारना काटना बहुत कॉमन है, खून है, डिस्ट्रक्शन है, गॉड्स की पावर की एक्सप्लॉयटेशन है, एग्जिबिशन है, ये सारी नॉलेज पावर है, बिल्कुल क्वेस्ट है कि मैं ये हूँ तो वो है, एक डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें इस पर बात होती है। The spring west wind was masculine, as was the autumn wind. Here the speaker refers to the spring wind as feminine, ठीक है। मिथोलॉजीज में वो masculine थी, लेकिन यहाँ पर पोइट इसे एक feminine ऑरा की तरह ले रहा, ठीक है। Perhaps to stress its role as nurture and life giver. This is the fifth perspective that I could not think about. Life, nature as a friend, foe, destructor, preserver and nurse. Nature as a nurse, जो आपको nurture करती है। preserver के perspective में आता है, लेकिन separately से लिया जाता है, ठीक है।
Perhaps to stress its role as a nurturer and life giver, she is a picture as awakening nature with her energetic clarion, which is a type of medieval trumpet. Trumpet क्या होता है? सेक्साफोन देखा है? वो तो बड़ा खूबसूरत किस्म का है, ट्रम्पेट और बहुत टाइप के हुआ करते थे. और क्या होता है? ट्रम्पेट इज सपोज टू मेक लाउड नॉइस, तो वो बांसुरी नहीं हो सकता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है. बस इसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट है, आप देख सकते हैं. ट्रम्पेट मैंने कभी देखा नहीं ना कुछ आया था. So this trumpet has a loud voice with it, a noise with it. That is the awakening call for all of these perspectives that we have just mentioned. The west wind is bringing this awakening call for those colors of people of colors and the changes that they can see. Then they give wild spirit which art moving everywhere, destroyer and preserver, here, oh, here. Now the last two lines, देखें तो, at the conclusion of the first stanza, the speaker identifies the wind as the powerful spirit of nature that incorporates both destruction and continuation of life. Again the binary of the cycle of life and death. एक चीज़ जाती है तो नेक्स्ट आती है regenerative, reproductive nature of life. In fact, these two processes are said to be related. Without destruction, life cannot continue. Do you agree with that? देखिए ये वही बात है जो विलियम ब्लेक भी कहता है कि without innocence you can't understand corruption, without day you cannot understand night, without misery you will not understand happiness. So in binary style का लेना देना बहुत है romantics के साथ. At the end of the line 14 is the phrase "oh here" that will be repeated at the end of the stanza 2 and 3. So that is the connection between stanza 1, 2 and 3, that this address to the west wind, "oh here" is going to be repeated. Repetition has another perspective to offer to the meaning making process of the poems. As such, repetition emphasizes on the point that the poet or the writer wants to make and wants the readers to understand that it is a prayer, it is a call, it is a reference to the wind itself. यहाँ तक बात समझ आई? This refrain emphasizes, now this section, ये दो lines जो हैं जिसे हम couplet कह रहे हैं, refrain भी कहते हैं, ये poetic words होते हैं, quatrain, refrain, sestet, octave, ये आपने कहीं पढ़े होंगे, somehow introduction में somewhere you must have read it about. आप यहाँ पे इसको refrain भी कह सकते हैं. Emphasizes sound which seems appropriate given that wind, an invisible force in the poem's essential subject. Now let's go back to the stanza and tell me, do we need to use human faculties, human senses in order to read this? Hearing is there, sight is there. Do we have touch as well? देखें. Do we have smell? It is very descriptive. First point is, the first stanza is quite descriptive. Nature related words are bombarded in the first one, that is there. And human faculties in one way or another are being used. Personify क्या हुआ है वो भी हमने discuss कर लिया, that comes in the style of it. So in the first stanza, all we can say is, the poet is addressing the west wind. He is telling us about the wild west wind which is forceful, that brings in sterilization and purification for the masses of any color, any culture. It doesn't care about where you come from. And it talks about the cycle, the regenerative cycle of life and death, that one thing goes and the second one comes along. So that is the entirety of the first stanza. यहाँ तक बात समझ आई? Now let's move on to second stanza. सेकेंड स्टेंजा का एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, पहले उसे पढ़ लेते हैं फिर टेक्स्ट को देखते हैं. In stanza 2, the wind helps the clouds shed rain, as it helped the trees shed leaves in stanza 1. Now we move forward to rain. Rain is going to be the main focus. Just as the dead foliage nourishes new life in the forest soil, so does the rain contributes to nature's regenerators. अब विंड अकेली जो है
it's not sufficient to regenerate nature. ठीक है, विंड सीड्स को उड़ा के वहाँ पर ले तो जाएगी, लेकिन पानी की ज़रूरत है, वो हमें सेकेंड स्टैंजा में पता चलता है. Now let's read the text. Thou on whose stream mid the steep sky's commotion, loose clouds like earth's decaying leaves are shed, shook from the tangled boughs of heaven and ocean. Angels of rain and lightning there are spread on the blue surface of thine airy surge, like the bright hair uplifted from the head of some furious maid, even from the dim verge of the horizon to the zenith height. The locks of the approaching storm thou dirge of the dying year, to which closing night will be dome of the fast spelter, vaulted with all thy congregated might of vaporous, from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst. Oh here. So this oh here is repeated, and look at the fact. उसने पहले ऑटम लीव्स के लिए कलर्स को यूज़ किया, कलर इमेजरी को, और यहाँ पर रेन देखिए, ब्लैक रेन. व्हाट इज ब्लैक रेन? व्हाट वाज ब्लैक डेथ इन रोमांटिसिज्म? That was the time. Dark ages. डार्क एजेस आर इन medieval literature. ब्लैक डेथ क्या है? Yes, Black Death is associated with the rapid plague that they faced, and thousands of people died. They were unable to save them, and that was caused by the dirt and the developmental sectors, whatever they अब गंदगी कैसे क्रिएट हुई थी, ये जो भी फैक्ट्रीज बनी थी, उन्होंने अपना वेस्ट मटेरियल जो पानी पीने वाला था उसमें करना शुरू कर दिया. उससे पेस्टिलेंस आए, उससे प्रॉब्लम्स आए, उससे ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हाईलाइट हुई. तो अगर ये पंखा स्लो ही कर दें तो अच्छा है, वरना फिर वही बात है, उस साइड को शायद आवाज़ ना. ठंड गर्मी तो नहीं है ना? आई डोंट थिंक वी नीड दिस. किसको गर्मी लग रही है? जी. Now let's look at line 16 2. Black death represents death. Black rain, on the other hand, is represented with the rain, which is going to wash away all those dirt, all that pollution, all that impurified things in the. अब देखिए, एक impurified चीज़ को purify करने के लिए impurified चीज़ें ही चाहिए. वो कहते हैं ना, to kill cancer you have to bring cancerous, और कैंसर क्या होता है? पॉइजन होता है, और उसको मारने के लिए पॉइजन ही इंजेक्ट किया जाता है. तो ब्लैक रेन रिप्रेजेंट्स कि उस ब्लैकनेस ऑफ दैट एरा को ख़त्म करने के लिए ब्लैक रेन दी गई. एक तो एसिड रेन होती है ना जो इन्वायरमेंटल स्टडीज में, तो वो रियल है, दैट्स अ लिटिल डिफरेंट. यहाँ पे ब्लैक रेन सिंबलाइज कर रही है, इमेज प्रेजेंट कर रही है. Once you finish the entire stanza, you will be able to contextualize it a little more. जब आप उसको चंक्स में पढ़ते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, as a whole पढ़ते हैं तो it makes sense. The words are easy, it is supposed to be easy, but because we have limitations, हमें इतनी इंग्लिश नहीं आती, including myself, तो हमें ये मुश्किल लगता है कि टेक्स्ट मोशन. उनके लिए ये बहुत आसान है, ये उनकी बेसिक अंग्रेजी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है. 9:16 to 18. This passage has been heavily attacked by critics like F.R. Lewis for its lack of concreteness and apparently disconnected imagery. Like I told you in the first stanza, there are scholars and people, they believe that each stanza can be taken separately. There are some loss of thoughts that could be found. जैसे हमें बहुत सारी poems में feel होता है ना कि पीछे से connection कैसे बनाना है, तो वो complication इस poem में भी है. Or F.R. Lewis says that it lacks the concreteness and apparent disconnected imagery is there. Others have cited Shelley's knowledge of science and possibility that these poetic phrasings might indeed be based on natural fact. If you remember, Shelley is a mad Shelley, and he used to experiment with physical medicine, physical aspect of medicine. So perhaps he tried to incorporate his scientific knowledge into his poetic knowledge. That's why it is a little absurd and indecisive for the people of literature to come to a conclusion that this is what perhaps he's trying to say. The loose clouds, for example, are probably cirrus clouds
harbingers or angels, as it is put in line 18 of rain. As the leaves of stanza 1 have been shed from the boughs, these clouds have been shaken from the heavier cloud masses or boughs of heavens and ocean. In Latin, cirrus means curl or lock of hair. It is thus appropriate that these clouds resemble a Maenaid's bright hair and are referred as to the locks of the approaching storm. Maenaid कौन है? क्या होता है? ये आगे वैसे बताएंगे. Any idea? नहीं पता है, चल पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा. So do you see the comparison? That in the first stanza we have the shedding of the leaves from the boughs, and in the second one we have rains coming from these clouds which are separately represented over here. You see the line 17 and line 18, 20 and 23, they are interconnected. In order to understand each one of these lines, we have to make a connection with each other in order to come to a conclusion. Then देखिए line 22, 23. You see, even though Gale did not mention the next lines separately, the reason because it's too complicated to take them separately. We have to contextualize it. आप पूछते हैं मुझसे बार-बार कि contextualization क्या होती है? This is contextualization, that you do not repeat, but you try to make connections with the future points which are there and the previous points as well. When Shelley was in Florence, he saw a relief sculpture of 4 Maenads, these worshippers of Roman gods of wine. So these Maenads were the worshippers of god of wine and vegetation, Bacchus. So in Greek mythology, Dionysius और या फिर आप इसके रोमन मिथोलॉजी में बेकस के जो वर्शिपर्स थे वो 4 Maenads देखे उसने फ्लोरेंस में. Now this is a reference to his autobiographical element कि आपको याद है ना कि फ्लोरेंस में, इटली में, somewhere near Florence, he had this muse of wind, जहाँ पर उसने डिसाइड किया कि वो विंड पे, वेस्ट विंड पे जो समर के एंड में आती है उस पर लिखे. So he saw these Maenads and they were wild, dancing women with streaming hair. Hence the speaker compares the appearance of the cirrus clouds streaked across the horizon with the Maenads' blow tresses. अब देखिए Maenads के यहाँ पर कर्ल्स बाल हैं, ऐसे करके बाल हैं और वो डांस कर रही हैं और वो बाल भी साथ डांस कर रहे हैं. तो वेस्ट विंड जब आ रही है वो वर्शिप करने की, जो डिफरेंट गॉड्स को वर्शिप करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं. जैसे हिंदी मिथोलॉजी में देर आर गॉड्स जिनके सामने नाचना पड़ता है, तांडव करना पड़ता है. तांडव पता होगा आपको? कुछ तो पता होगा. ग्रीक और वो हम बिल्कुल नहीं देखते ना, उससे रिलेटेड ड्रामे शायद हम नहीं देखते. इसके आपने देखे होंगे कि उसमें उन्होंने वो अपने गॉड की तरह का मेकअप किया होता है, वो रेड कलर का, ब्लैक कलर का, एंड दे आर डांसिंग विद द त्रिशूल. दैट इज तांडव. That is a religious dance. That is not a vulgar dance that we see these days. Dance is an art form, by the way, and the Kathak dance and all those kinds of dance are supposed to actually enlighten you about the art form. लेकिन हमने उसमें भी उसको भी sexualize and sensualize कर दिया है. बहुत ही गलत steps हैं. असल मसला यहाँ पर है. Steps में शायद मसला ना भी हो. It's all here. Would you agree? Yes. अच्छा होता है. चलिए ठीक है, मान आगे देखिए. The image seems especially appropriate in Dionysius because he is associated with the natural world and the wind and the clouds are primary elements of nature. Again, the reference to paganism, that these gods were worshipped. अगर thunder चाहिए, storm चाहिए, बारिश चाहिए, etc. चाहिए, तो वो gods को ऐसे नाच के भी Maenads जो थे, they were supposed to worship them. ठीक है. Then line 23 to 28, the wail of the wind is compared to the song of grief, as it were mourning the dying year. As the year draws to a close, nature prepares for the funeral. The coming night is described as a spectacular, a burial tomb that will be marked by lightning and hail from a storm. This last day will end in darkness under storm clouds. And let's look at the lines. Angels of rains and lightning there are spread on the blue surface of thine airy surge, like the bright hair uplifted from the head. फिर वक्त हम आगे देखते हैं and then conclusively इन दोनों को इकट्ठा देखेंगे. Then the wail of the wind, अच्छा ये हमने देख लिया. So what happens when the dark rain comes, the black rain comes, the rain is there, we see
the surge, we see the blue surface, we see the fullness of these perspective that he's saying. And then he says that the night, the coming night, is described as a burial tomb for the marked lightning and hail. Lightning and hail क्या होता है? गरज बरस, वो जो आप इस मौसम में देखते हैं, तो दैट शो केसेस जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है तो आपने देखा डार्कनेस आ जाती है, बिल्कुल लाइट चली जाती है, एक कलर स्कीम चेंज होती है, येलोइश, डार्किश, ब्लैकिश चीज़ें हम कलर्स को देख सकते हैं. इवन ये रोस्टम वाला कलर भी कभी कभी जनरेट हो जाता है. सो दीज कलर्स दे रिप्रेजेंट समथिंग इज कमिंग एंड दे आर प्रिपेयरिंग अस about the coming night which will be full of darkness. If not night, maybe the coming time which will be representing the same. लिखा हुआ है a burial tomb that will be marked. ठीक है? Okay, यहाँ तक समझ आई? That in the second stanza he is just talking about the rain which he got inspired in Florence, where he saw these Maenads worshipping the gods they have mentioned, Bacchus and Dionysius. You can note them down somewhere so that you remember which god they are referring. And then they are talking about how these rains, they are going to aid the west wind. बारिश में भी हवा तो चलती है ना, बहुत तेज़ चलती है. अब सीड्स उड़ के एक पॉइंट पर चले जा चुके हैं, वेजिटेशन के पॉइंट पर जा चुके हैं. वहाँ पर मिट्टी भी उड़कर आएगी, अर्थ अपना काम करेगी, विंड अपना काम करेगी और पानी अपना काम करेगा. तो ये पूरा जो पर्सपेक्टिव है सरफेस लेवल पे एक प्रोसेस को बता रहा है, एक प्रोसेस के पूरे होने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बता रहा है. डीप डाउन अंडर द एनालिसिस कुड बी अटैच्ड टू द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ people of that era that were going through these impure thoughts about industrialization, detachment, not having to say anything to anybody. Everybody was so materialistic that they were breaking apart. So he wants to compare this binary that nature is still one. Nature के सारे elements इकट्ठे आकर जो उन्हें करना चाहिए वो कर रहे हैं, but the humans they are drifting apart. लास्ट जो रेफरेन है ऑफ वेपर फ्रॉम whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst, oh here. So all these natural phenomena will burst, they will come out in one way or another, in one shade or another, in one color or another, in one culture or another, but the west wind will continue to do whatever it is supposed to do. And then he again addresses it, oh here. Okay? Then we have stanza number 3. In stanza 3, the west wind wields its power over the sea. Now we shift to sea. पहले हमने बात की, सबसे पहला stanza था अर्थ एंड उसके साथ हमारे पास इमेजरी है लीव्स की. सेकेंड में हमारे पास रेन है. ठीक है, अब हमारे पास बटे आ गया सी. But unlike the first two stanza, this is introduced by an image of calm, peace and sensuality. पहले हमने एक अनरेस्ट देखा है, ठीक है, एक रैपिड रीजनरेटिव रिप्रोडक्टिव साइकिल देखा है, आने जाने की हमने जल्दी देखी है कि आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं, ट्रेडिशन जा रहा है, नेक्स्ट ट्रेडिशन आ रहा है, लोग जा रहे हैं, अगले लोग आ रहे हैं, लीव्स जा रहे हैं तो नए स्प्राउट हो रहे हैं. यहाँ पर देयर इज़ अ सेंस ऑफ कामनेस, पीस एंड सेंसुअलिटी. The Mediterranean Sea is pictured as smooth and tranquil, sleeping alongside the old Italian town of Fair. Once a playground of Roman emperors, Fair sunk as a result of volcanic activity and is now the bed of lush underwater garden. Do you see the understanding that they wanted, the introduction wanted us to have? That he is not just talking about natural phenomena he can witness. He's talking about his scientific knowledge about these volcanoes. Did you have this knowledge? I did not. Because as a man of science, he also knew this, so he brought in the facts as well that made his poetry a little more complex to comprehend. Although symbolic है, images हैं, सब कुछ है, लेकिन scientific positioning भी यहाँ पे दी जा रही है. But actually he tried to explore the scientific knowledge. he is trying to incorporate, and he wants his readers to understand the science that is behind all these natural phenomena. हर चीज़
के पीछे कुछ न कुछ तो है ना. अगर आपको वो याद हो जो पोएम हमने पढ़ी थी, there was an image, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम थी जिसमें there was an image that natural fountain can burst itself from the earth. याद है? उस इमेज में नेचर इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स, ठीक है, और तेज़ी से वर्ड्सवर्थ ने कुबला खान में पढ़ी थी, ठीक है. उसमें क्या होता है कि पानी खुद आता है, दीवार के साथ लगता है और फाउंटेन खुद जनरेट होता है. सो उस फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे भी कि एक नेचर की अपनी फोर्स है और वो एक प्रोसेस के थ्रू यहाँ पहुँचता है. द विंड कैन ऑल्सो वेकन the sea and disturb the summer tranquility of waters by ushering in an autumn storm. ठीक है. पहले स्टेंजा में हमारे पास नेचर एज अ डिस्ट्रक्टर एंड प्रिजर्वर था जिसमें हम उसको एड्रेस कर रहे हैं. यहाँ पर इट इज सेइंग दैट द नेचर कैन डिस्ट्रॉय एंड डिस्टर्ब द कामनेस ऑफ सी एज वेल. ठीक है. नेचर हैज़ द वेस्ट विंड हैज़ द वाइल्ड रेन हैज़ द कैपेसिटी टू क्रिएट दिस डिस्टर्बेंस इन द सी. ऐसा ही है ना, पानी को किसी भी तरह बहा के हवा ले जा सकते हैं, और अगर ऊपर बारिश भी हो रही है तो वो इट इज़ एडेड, वी कैन से फोर्सेस टू द सेम फिनोमेना. देन लाइन 32 to 33. In 1818, Shelley himself had sailed past the Bay of Bay in a December letter to Thomas Love Peacock. He enthusiastically described the ruins of its antique grandeur, standing like rocks in the transparent sea under a boat. Ruins of its antique grandeur. Ruins क्या होते हैं? Something, some civilization perhaps, some island perhaps which was destroyed, maybe a shipwreck, कुछ भी हो सकता है. Yes, उसकी जो डिस्ट्रक्शन है वो पानी में अंदर वो देख सकता है. ठीक है. वो जो टूटी हुई एंटिटीज़ हैं, बी इट नेचुरलिस्टिक और मैन मेड, ही कैन सी through the water and the rocks are there. Beginning at the end of line 36, the speaker disturbs the peace of the scape and reminds the west wind of its power to churn up wild and wide crab surfs. So there is a reference, there is an address to the west wind, and the speaker says that the wind, the west wind has the capacity, has the forceful energy to disturb this peace, calmness and sensuality of the water of the sea, through which he can witness the ruins of the antique land. ठीक है. So कह रहा है, oh here, wild west wind, you can disturb this calmness. You are the only one who can do this. The next line देखें, line 39 to 42. The lush green foliage, which is shapeless because the plants are underwater, is aware of the wind's ability to destroy, remembering the havoc of cold weather storms. The vegetation is drained of color as a person turns pale with fear, or as plant life on earth fades in the fall. Again, the imagery of that color and the falling of the leaves in the season of autumn or fall. In a note to these lines, Shelley wrote, the vegetation at the bottom of the sea or rivers and lakes sympathizes with that of the land in the change of seasons and is consequently influenced by the winds which announces it. आपने देखा है कि वेजिटेशन के पूरे प्रोसेस को पूरा होने के लिए सन, पानी, हवा, ऑक्सीजन, हर चीज़ की ज़रूरत है. लेकिन जो वेजिटेशन अंडर वाटर हो रही है उसको किस तरह की चीज़ों की, किस किस्म के एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, उसकी वो बात कर रहे हैं. और उसको भी क्या डिस्टर्ब कर सकता है? वेस्ट विंड. इट इज़ ओनली द विंड दैट कैन further disturb the ruins that he could see under the water, the vegetation that he can witness under the water. The natural cycles of death and regeneration thus continues even underwater. Okay, not only on the surface level, not only on the earth, it is happening, it is also happening underwater as well, with the aid of west wind. So west wind is like a group of people, a force, a united force, which not only disturbs, perturbs or changes or brings treatment to the earth, but also the vegetation that is found under the water. The west wind, har jagah, it's everywhere. Then line 43 to 56.
after 3 stanzas of describing the west wind's power, which are all echoed in the first 3 lines of the stanza 4 का text देख लें 1 मिनट के लिए. स्टेंजा 3 भी देख लें, जो हमने डिस्कस किया है, क्या वही बात हो रही है. Thou who didst waken from his summer dreams, the blue Mediterranean where he lay, lulled by the coil of his crystalline stream, besides the Pampais in isle of bay in a bay, and saw in sleep old palaces and towers quivering within the waves' intenser day, all overgrown with azure moss and flowers, so sweet the sense faints picturing them, thou for whose path the Atlantic levels powers cleave themselves into chasms, while below the sea blooms and the oozy woods which wear the shapeless foliage of the ocean know thy voice, and suddenly grow grave and fair, and tremble and despoil themselves, oh here. अच्छा, इस स्टेंजा का सेकंड सेक्शन देखें. beside the Pumice Isle in the bay, saw in deep old palaces and towers. So we know for a fact the things that the poet, the speaker, the poetic persona can see under the water has to do with those ruins of the ancient people, civilizations. उनके towers हैं, उनकी buildings हैं, उनके palaces हैं, वो पानी के नीचे वैसे ही हैं. उस पर moss आई हुई है. What is moss? पंजाए, वो जो ग्रीन चीज़ होती है ना पानी में, moss. So this is again reference to his understanding of scientific processes which he is making part of poetry, and that is making the poetry itself a little difficult for poetic imagination. Okay? Then stanza number 4, line 42 to 56, जिसमें उसने एक generic understanding दे रखी है पूरे stanza की. After 3 stanzas of describing the west wind's power, which are all echoed in the first 3 lines of stanza 4, the speaker asks to be moved by this spirit. This spirit is the west wind. आपको याद है शुरू में हमने कहीं पढ़ा है कि वेस्ट विंड इज़ अ स्पिरिट, अ सोल एंड इंस्पिरेशन. तो ये सारे वर्ड्स जो है ये इम्पॉर्टेंट हैं टू यूज़ इन योर पेपर एज वेल. ठीक है, याद रखिए. For the first time in the Ode to the West Wind, the wind confronts humanity in the form of speaker of the poem. No longer an idealistic young man, the speaker has experienced sorrow, pain and limitations. He stumbles even as he asks to be spiritually uplifted. Now for the first time in the entire poem there is an intervention from a humanity grounds or humanitarian grounds where human की बात हो रही है कि this human, this poetic persona, the speaker wants to be uplifted, elevated by the west wind. पहले उसने majestic power के बारे में बात किया कि west wind ये है ये है ये है. अब जो poet है which is probably himself, poetic persona, वो बात कर रहा है कि let me be uplifted by the forceful west wind. I would like to be purified, change, move, shift, transit, transcendentalist perspective of nature को वो feel करना चाह रहा है. That's why he's addressing the nature himself now. He stumbles even as he asks to be spiritually uplifted. At the same time, he can recall his younger years when he was stainless and swift and proud. When you are younger, हम बड़े stubborn होते हैं, we do not understand others' perspective. हमें यही लगता है कि जो हमारा perspective है वही सच है. लेकिन with the passage of time, we grow, our mind grows, our patience level grows, and many other perspectives grows. Similarly, when civilizations they practice a thing, they change, they move. ठीक है, बहुत सारे practices को move करके या तो ख़त्म किया जाता है या change किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है. उसी बेहतरी की ये भी बात कर रहा है that west wind is bringing those changes, and he recalls that once he used to be a proud, swift and tameless kind of a boy like the wind itself. These recollections help him to recall the wind for inspiration and new life. So he is repairing himself as a poet. He is recollecting himself as a poet. He wants to pure his thoughts, he wants to purify and purge himself so that he can produce something productive. ठीक है, एक तो हमें नेचर लेवल पे पता लग रहा है कि वो नेचर की बात कर रहा है, लेकिन पर्सनल लेवल पे, रोमांटिक लेवल पे, ही वांट्स पीपल टू चेंज,
He wants people not to be materialistic, not to be conformist, not to be the people who are just following the followed, and do not follow blindly the political things that are bestowed upon you. He wants them to get a new life. He wants this West Wing to change all of it and make a new generation with new perspective. In this manner, the poem suggests that humans too are part of never-ending natural cycle of death and rebirth. उनके कल्चर ले लें, उनके कलर ले लें, उनकी बॉडीली शेप्स ले लें, कोई भी पर्सपेक्टिव ले लें, हम चेंज होते हैं. पहले बच्चे बच्चियाँ बहुत लंबे आते थे, फिर मिडिल साइज़ के आने लग पड़े, अब बहुत छोटे आते हैं. यस, ये डिफरेंसेस साइंटिफिक भी हैं, ठीक है. हम इसे कल्चरली किसी तरह भी इंटरेस्ट लेके डिपेक्ट कर सकते हैं कि हम यूजुअली यही कहा जाता है ना कि डाइट का लेना देना इससे. द डाइट इज़ पॉइजनस, एवरीथिंग दैट वी ईट हैव पेस्टिसाइड्स इन इट, सम काइंड ऑफ केमिकल इज़ देयर. कोई भी सब्जी आप फ्रूट ले लें, इट्स फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड एवरीथिंग. प्रोसेस्ड फूड हम बहुत खाते हैं, ये जो बॉक्स पैक चीज़ें. इवन दही भी हम जमाना पसंद नहीं करते, वो बॉक्स वाले खा लेते हैं. सो आई यूज्ड टू हैव अ टीचर, शी यूज्ड टू से कि बॉक्स वाले खाने से अच्छा है यू स्टार्व टू डेथ. वो सीधा सीधा ये कहती थी, इससे अच्छा आप भूखे मर जाओ खाने के लिए. एक्सट्रीम लेवल अंडरस्टैंडिंग होगी ना उनके पास, कोई साइंटिफिक. हमारे पास नहीं है, हमें जो टेस्ट लगा हम निकल लेते हैं. So that is what he is trying to focus in these lines. Now look at the stanza number 4 ka text. If I were a dead leaf thou mightest bear, if I were a swift cloud to fly with thee. Look at the mention of personal pronoun. You'll see that now it's all about I, right? A wave to pant beneath thy power and share, the impulse of thy strength only less free than thou. Oh, uncontrollable, if even I were as in my boyhood and could be the comrade of the wanderings over heaven, as then when to outstrip the sky speed. Scarce seemed a vision I would never have striven, as thus with thee in prayer in my sore need. Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud, I fall upon the thorns of life I breathe. A heavy weight of hours have changed and bowed, one too like thee, tameless and swift and proud. ठीक है. अब यहाँ पर वो ओ हेयर नहीं कह रहा, ओ वाइल्ड विंड नहीं कह रहा, बिकॉज इट्स अबाउट हिम. और अभी जो हमने इंटरप्रिटेशन पढ़ी है, इंट्रोडक्शन पढ़ी है, इट्स द सेम. दीज वर्डिंग्स आर वेरी ईजी, वेयर द पोएटिक पर्सोना indulges into the conversation with the west wind and he says that I want to be one with you. I don't want to be a wild west wind. I want to be that calm west wind that is still there on the calms of the sea. अभी सी वाले स्टेंजा में हमने ये नहीं देखा कि वो बहाकर बर्बाद करके ले गया, लेकिन इट हैज़ द पावर. जहाँ पर वो उसको एड्रेस करता है कि वेक अप वेस्ट विंड, यू हैव द पावर टू शेक द वेजिटेशन अंडर वाटर एज वेल. यहाँ पर वो कह रहा है कि नाउ शेक मी, टेक मी एज अ क्लाउड, आई वॉन्ट टू ब्लीड. ही सेज लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ एट अ क्लाउड. वही सारे वर्ड्स हैं कि मुझे एक ऑटम लीफ की तरह उड़ा कर ले जाओ, एक वेव की तरह बहा कर ले जाओ, या एक क्लाउड की तरह लिफ्ट करो. अब ये लिफ्ट फिजिकल नहीं है सिर्फ, इट इज़ ऑल्सो पोइटिक, इट इज़ ऑल्सो पर्सनल, इट इज़ ऑल्सो अबाउट एज अ नेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट द पीपल हु आर फॉरगॉटन, इट्स ऑल्सो अबाउट एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ. दैट्स व्हाई दिस इंटरप्रिटेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है. अब हम चलते हैं इसकी पॉसिबल इंटरप्रिटेशन पे. कौन सा वाला बेटे? जो विंड है उसको एड्रेस करते हुए ये पोएटिक पर्सोना कह रहा है, लिफ्ट मी एज एन ऑटम लीफ, अपलिफ्ट मी एज अ क्लाउड, टेक मी विद यू व्हेन यू आर ब्लोइंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, न्यू सिविलाइजेशन, न्यू पर्सपेक्टिव, प्योरीफाई मी, पर्ज मी, टेक मी टू अनदर पर्सपेक्टिव. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर इमेजेस को उन्होंने कैसे यूज़ किया है उसकी बात कर लेते हैं. Line 47 to 52. In line 47, the speaker begins to explain that an idealistic youth, he used to race with wind. यानी वो समझता था कि वो wind को beat कर सकता है या same सफ में चल सकता है. He was proud, a little stupid, a little naive at that time, and wind in his own mind. But now, as an older man, he could never imagine challenging the wind's power. In these well-known lines, often mocked by Shelley's detractors, the patterns of sea, earth and sky are recalled
as the speaker asks to be raised from his sorrows by the inspirational west wind. So this is autobiographical, that whatever sorrows and the losses that I've bared, just take me with you, uplift me, elevate me. He seems almost Christ-like in his suffering. Another representation could be there. This is a little complex, मगर ऐसा ही है. Christ के साथ क्या हुआ था? He was crucified on a cross and then lifted in the air, and then he died by protesting. So he feels, now this is a Christian reference, कि मुझे इसी तरह से uplift कर लो जैसे Christ ने अपने आप को uplift किया था in order to disseminate and inspire his people. Inspire me the way Christ inspired his followers. This is what the address is about. He seems almost Christ-like in his suffering, like thorns of life, recalling the crowns of thorns worn by Christ during his crucifixion. The Christ-like image of the speaker continues here. His life experiences have been heavy crosses for him to bear and have weighed him down. Now all those losses, his 2 children died, his wife died, she drowned herself, he was plagued, his political hopes were taken down, he had illegitimate children and what not. हर किस्म का प्रॉब्लम तो उसकी लाइफ में था. सो ही इज़ आस्किंग द वेस्ट विंड टू प्योरीफाई मी एंड लेट डाउन माई बर्डन. मेरा बर्डन तुम ले जाओ, पानी में ले जाओ, हवा में ले जाओ, लीव्स में ले जाओ, टेक माई बर्डन. ठीक है. एंड येट देयर स्टिल seem to be spark of life and hope within him. He can still recall what he possessed many of the when he possessed many of the wind's powers and qualities. It's almost as if जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था, my heart dances with the referrals. यहाँ पे Shelley कह रहा है that I used to have similar kind of qualities when I was a little younger and I was as enthusiastic as the west wind, and now it wants to revive it. It wants to go back to it. Then we have redemption. Yes. Now stanza 5 है. Now there is a comparison with stanza 4. If stanza 4 is the explanation of why the west wind is being invoked, stanza 5 is the prayer itself. ठीक है. आपको याद है शुरू में इंट्रोडक्शन में वी टॉक्ड अबाउट दैट हाउ द एंटायर पोएम इज एन अपॉस्ट्रोफी, अ क्वेश्चन, अ प्रेयर एज अ होल. ठीक है. वो प्रेयर कहाँ से क्लैरिफाई होती है? 5th स्टैंजा. 5th स्टैंजा का टेक्स्ट देख लेते हैं. प्रे ही कर रहा है, एड्रेस भी कर रहा है, और एक पूरी आप एज अ पोएम पूरी को एज अ प्रेयर ले सकते हैं. दैट इज व्हाट द इंट्रोडक्शन टोल्ड अस. Make me thine ire, even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? The tumult of the mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone. Sweet thou in sadness, be thou spirit fierce. My spirit, be thou me, impetuous one. So he's saying, be one, be me. Let me be you, you be me. That is the imploration, the prayer that he's saying over here. Drive my dead thoughts over the universe like withered leaves to quicken a new birth, and by the incantation of this verse, scatter as form of unextinguished earth, ashes and sparks, my words among mankind, be through my lips to awaken earth, the trumpet of the prophecies, O wind, if winter comes, can spring be far behind. So he is again going into a frenzy of his own poetic purgification, his purification, that, O west wind, take me as one, let's be one, let me be you, you be me, and we move forward with my words. We disseminate information among masses about these glorious winds and the naturalistic powers that a human and nature itself has. So he says, let's scatter my words, my information, right? अब इसकी possible interpretation देख लेते हैं. The request of the speaker seems to gather speed as much as the wind does. While he begins by asking to be moved by the wind, he soon asks to become one with this power. As a breeze might ignite a glowing coal, the speaker asks for the wind to breathe new life into him and his poetic art. So he's saying कि west wind, like what you do with the rest of the natural phenomena, sea, earth and sky, do it with me as well. Tell me, मुझे ऐसा कुछ बता दो, ऐसा कुछ फूंक दो मेरे पे, so that my poetic art is revived. With his last question, the speaker reminds his audience that change is one of the horizons, be it personal, natural, artistic or political. So वो सारी बातें जो हमने अभी बैकग्राउंड में की हैं, वो सब इस स्टेंजा का क्रक्स है.
वो सारी बातें आप इस स्टेंजा में कर सकते हैं. The ire referred in the line 57 might be the Aeolian ire of harp. It's named derived from Aeolus, god of the winds. Harp क्या होता है बेटे? Harp. हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. वो जो वो कौन सी होती है, वो ग्रीन कलर की उड़ने वाली एक मेजेस्टिकल चीज़ है, क्या है? टिन टुन टुन क्या है? एक कार्टून है ना बेटे, टिंकर बेल्स. यस, वो हाथ नहीं बजाती, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बजा रही होती है. दैट इज टिंकर बेल्स. टुन टुन पता नहीं कौन है मेरे में, वो मेरे माइंड में हुआ था. सो उस हार्प की बात कर रहे हैं. एंड दिस हार्प इज एसोसिएटेड विद another god from Greek mythology, that is god of winds. This is a box with strings stretched across an opening. When the wind moves through it, the Aeolian harp emits musical sounds. Many romantic writers, including Coleridge in his poem The Aeolian Harp, use the instrument as a symbol for human imagination that is played upon by a greater power. आपको याद है ना, हमने बात की थी कि वर्ड्सवर्थ जो है वो गॉड में बेशक बिलीव ना करता हो, लेकिन एक सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करता है. और कॉलरिज भी कर रहा है, और शेले इटसेल्फ, ये तीनों ये कह रहे हैं कि ये जो विंड आएगी, ये जो हवा आएगी, ये जो फोर्स आएगी, ये जो सुपर नेचुरल गोस्ट आएंगे इसके साथ, वो अपने साथ ये पावर लाएंगे कि वो इस म्यूज़िक को जनरेट कर सकें. Here the speaker asks to be west wind's ire. It means of music and communication. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई बेटे. The rest can be read. बल्कि पढ़ लेते हैं, टाइम है हमारे पास. Here the speaker seems, this is line 58 to 62. Here the speaker seems to accept his sorrows and sufferings. He realizes that the wind's power may allow him to add harmony to autumn's music. He is still sad, but he recognizes a sweetness in his pain. He is part of a natural cycle and will have chance to begin again, both as a man and a poet. Just like any regenerative cycle or rebirthing process, he believes, he's being positive over here, that he will have the chance to recreate or create and reproduce his poetic journey to another level, which he does actually. This becomes one of his legendary and most talked poem later on. The speaker's growing strength is hinted at by the powerful exclamation in 61 and 62. The wind blew leaves over the forest floor, fertilizing this soil now. The speaker asked the wind to scatter his time-worn ideas and writing across the earth in hopes of inspiring new thoughts and works. It's almost as if like the romantics wanted the future people to understand what is at stake, and he is using his own stagnation, his own understanding of facing the fright that he was facing by mentioning that this new wind will bring new perspectives and we should go with the new perspective altogether. Note that the word play on leaves which can be found either on trees or books. In the Defense of Poetry, which is a book, Shelley wrote that the mind in creation is a fading coal which some invisible influence like an inconstant wind awakens to a transitory brightness. In asking the wind to fan and hopefully arouse the dying embers of his verse, the speaker seems to be echoing this idea. This is a very good reference to remember, that he wants the nature, the wind, to disseminate, to scatter his words, his old words, his new words to the generations, and he wants to inspire and disseminate environmental consciousness among masses through this plea, this imaginative plea. The line recalls the angel's clarion in line 10, awakening the earth from the wintry slumber. The speaker here asks to become poet prophet of the new season of the renewal. Do you see? जैसे romantics चाहते थे कि वही नए singers हों, वही new लोग हों जिन्हें लोग माने जाने, वो glorification चाहते थे. यहाँ पर वो भी यही चाह रहा है, that the new people, the younger generation of romantics, or the people to come should understand what is at stake. Shelley originally framed the last two lines as a statement, phrased as a question. The poem ends on a note of expectancy rather than affirmation. The speaker has made his case and plea to assist the wind in the declaration of new age, but he has not yet received. लाइन नहीं है आगे, ठीक हो गया. यहाँ तक बेटे समझ आ गई पोएम. You have to understand this is a complex poem
अगर आप इस सारे इंटरप्रिटेशन को ना लेके चलें तो बड़ी आसान सी लगती है, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इजी लेवल, इससे आसान लेवल की भी इंटरप्रिटेशन एक बार पढ़ना चाहें तो पोइट्री फाउंडेशन, एक लिंक मैं आपको भेजूंगी, उसमें लिखा होगा समराइज्ड वर्जन, थोड़ा सा आसान होगा, पहले उसे पढ़ें फिर इसे पढ़ें, दिस विल बी अ लिटिल मोर ईजियर फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड। फोकस किस चीज़ पर रहेगा? इसमें फोकस है नेचुरल फिनोमेनास, ठीक है, नेचुरल रिप्रेजेंटेशन फिनोमेनास, इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी है। इट्स अ रोमांटिक पोइट, it's a romantic poem itself because it talks about all those tenets and characteristics which are prevalent in the romanticism, the basic tenets of romanticism. उसके अलावा इसमें क्या important है, dualistic interpretation level of the poem. First is nature depiction, a description of nature, and the second level is poetic journey, his personal life and romanticism, तीनों को mix and match करके. So dualistic nature of poem is definitely there. उसके अलावा द फोकस इज दैट हाउ वेस्ट विंड, अ नेचुरल फिनोमेना, हैज़ द पावर टू चेंज योर पर्सपेक्टिव इफ़ यू लेट इट, ठीक है। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट मैनी अदर यूनिवर्सल थीम्स, द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, इनोसेंस वर्सेस करप्शन, रीजनरेटिव साइकिल, रिप्रोडक्शन एंड मच मोर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसका फोकस हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल, सोसाइटी लेवल पे, सोशलिस्टिक, क्या कहते हैं, सोशियोलॉजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ टाइम एंड अगेन ही सेज दैट ओ वेस्ट विंड डू दिस दैट फॉर मी, और जहाँ आखिरी स्टेंजा इसका क्रक्स है जिसमें वो कहता है कि लेट माई वर्ड्स बी दोज प्रोफेसाइजिंग वर्ड्स, कि वो प्रोफेसी की तरह काम करें कि ये आप करोगे तो ये होगा। तो ही इज़ बिकमिंग अ काइंड ऑफ अ टीचर इन हिमसेल्फ, कि मैं टीच कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द एंटायर पोएम फॉर यू।